Okay. Oh. Okay. I came here because it was closing on 70 and we would enter some buys. Too much over trading now. But it is not. So it is not closing on 70. This one. I wanted it to close on 70, but instead of this it closes on 67. I closed my trade here, 60. It pushed until 54. TP was at 54 and it pushed until 50. Nice. I don't think there's a trade. I already took my trade. I already took my trade. So if something closes below here, we're gonna sell. Oh man. I want to see something here. I want to see something here. I want to see something here.
There is a motherfucker. This motherfucker has stupid ideas about gold. This is a motherfucker. Like, not a motherfucker, he's good, but
this week. Clean, key levels, no noise. Let's break down the chart. Price is sitting right back inside this major 4050 to 4000 level. If it bounces here and holds above 4100, the first upside target for me is 4150. That's been a key reaction area multiple times. If it can hold above 4150, then I'm looking at 4200, and beyond that 4250. If we start breaking that, I'm watching for highs to get retested. But right now it's getting less and less likely that there is going to be a rate cut in December, down to a 53% chance from over 95% just a month ago. This could help sustain the current bearish pressure we're seeing on gold. So if we start to break below and hold this 4050 to 4000 level, I'm eyeing 3950, and below that my longer term target sits at 3846. Still a big level for a potential full 50% retracement of the weekly bullish move. That's the playbook. Levels are clean, structures defined. Save this and follow for midweek updates once the fundamentals hit. Is my technical outlook on gold this week clean? Good morning, bro. If you think This is the boss. you, it's not. You're the one who's against yourself. Do you feel proud when you look in the mirror every morning? The Do boss. you feel proud? Do you like what you see in the mirror? Are you proud to take... He's my mentor. I learned trading from him. I still learn trading from him. So coffee shirt when you look in the mirror every morning? If not, that's exactly how the world sees you. And let me tell you, this may sound very, very simple, but the way you eat, the way you move your body, the way you function, the way you work out, it's exactly the way the world will treat you. 100%. The universe will look at you, the universe will say, okay, you know what? We will take care of this person exactly the way he's taking care of himself. And that's the bottom line, bro. That's it. There's nothing to it. I can guarantee you this. If you can control that simple part of your life, that small part where you eat the way you're supposed to eat, where you work out the way you're supposed to work out, where you move the way your body's supposed to be moved, man, I can 100% guarantee you everything that you ever wish for, it will come true. It will come to your life. But if you don't, if you ignore these small things, it will be an uphill battle, and it will be very, very difficult. Have a good day, sir. Thank you. I claim, so you wanna play? We brought a model rap about your pain. Young, still running. तुम्हें शक है तो कराची चल आके देख किसका जोर है कराची पर हे छोड़ कल तू आज ही चल मेरे आगे कराची ना करो शबाबुर कराची चल आके देख किसका जोर है कराची पर ये छोड़ कल तू आज ही चल मेरे आगे कराची ना कर तीर Cristiano, how are you? yes, I'm good, my friend. And you? I was thinking I interview you like every 3 years, and in 3 years an amazing amount of stuff happens in your life. Do you ever stop and think, this is some kind of my friend said there is some kind of controversial. What the fuck am I saying? There is some kind of controversial thing here. So let's see. your life is like insane? I never thought about that, but I have to agree with you. It's true. The last interview that we made was hard, honest, like always. This is what I pretend to do with my interviews, which is I don't do it a lot because of that, because less is more, as you say. But in this time, I promise I'm going to be a good man. You've told Gio you're not going to be too controversial. I say because I share with her that I'm going to give interview to you, and I say I promise that I'm going to be a good man.
Do you think you'll keep that promise? Yes. Today, yes. Okay, we'll see how you get on. Let's see. I love we're in Saudi Arabia, you're home in Riyadh. I love your man cave here, but there's one problem. You know what it is? Where is the Arsenal shirt that I gave you? I knew it. I mean, where is it? It's inside the... Yeah? I mean, come on. You know, it still kills me. The revelation that you made last time, that you could have been an Arsenal player, that you met Arsene Wenger, you were going to come, it was all done, all agreed. And then, you know who I blame for this? John O'Shea. You know why I blame John O'Shea? Because Sporting Lisbon played Manchester United in a friendly, and you terrorised John O'Shea so badly that 4 of the United team went to Sir Alex Ferguson, their manager, and said, do not leave before you sign this kid. And he didn't leave, and he signed you that day. True story? It's a true story. But it's, as I told you, Pierce, the past is gone. It's part of the life. And honestly, when I look at Arsenal, I'm always looking not like a rival. Like, I was nearly there. So I'm not going to say that I have a passion for the club. But when I look at Arsenal, I like the team. I liked when they win because of that story. But, you know, I was the life, you know, I was the football. It's all about opportunities and moments. And this is what I see. And I took that opportunity. But to be honest, and you know that I'm never lie, or sometimes, sometimes I'm lie for a good ways. But I was nearly there in Arsenal, to be honest. But I think my story not will change a lot. So will be very similar. It won't change for you, but it changed for me. I don't think so, because Arsenal still continue a top team and win titles and everything, big players. So maybe Arsenal will be better, but not what it could have. Not too much. Do you think we'll win the league this season, Arsenal, the top of the league? Could be. It's possible. I think the Premier League, it's the level of the teams it's very, very similar. I mean, the top ones. But you know, the Premier League, it's always, you never know what's going to happen. It's very, very difficult league, very tough league. But Manchester not going to win the league for sure, because they have so many points behind right now. It's possible, yes, but I don't believe on that. Arsenal, probably. Give me some hope here. Come on. Yeah, it I can need be. the big dog to give us the. It's yes. possible. Let's see. Let's see it come out of your lips. Yes, Arsenal can win the league. Yes, Arsenal can win. Thank you. I've got my soundbite. It's possible. You mentioned Manchester. You're probably talking about City, not United. Last time we spoke was a very different situation. You'd fallen out with the people at United. You wanted to leave. You did leave. Pretty much everything you said in that interview has been borne out by events. So even though it caused huge controversy, I don't think anyone can look back at that interview and say you weren't being completely honest, and that the problems you identified were obviously true. There's not been much improvement. I mean, if anything, United have gone backwards since that interview. What is going wrong with United, do you think, and how can it get fixed? Imagine being able to build anything just by thinking about it. Meet Base 44, a complete AI creation platform made for anyone with an idea. Well, as you mentioned, good. For me, it's I'm sad because of the club, that one of the most important clubs in the world, and a club that I still have in my heart because of the obvious reasons. You have to follow with the intelligent people, smart people, to create a base for the future, as Manchester United have so many years ago. Nicky Butt, Kerry's, Roy Keane's, Beckham's, they become a big players, but they had youth. So Manchester United right now doesn't have a structure. I hope that change in the future, present future, because
the potential of the club, it's amazing. It's one of the most important clubs of the century. So Do you still look out for United results, and does it hurt you to see how badly they're doing? of course, because I was The reason played I'm there not so many taking the years. I trade, win the Champions League there. I win the Golden Ball. I win aggressive trade, like 12, 13, 14 only titles what there. which So will as I align say, with and I mine repeat, is Manchester United because still in my heart. I love that club. I'm seeing But Cristiano, we the have all most to be disciplined honest and man look for right ourselves now, and say, listen, they are not and in a I'm good thinking path. like, So what is he doing? they need to change, and it's not Maybe he only knows about something the coach about and players, football. in my And opinion. in my mind, There's a I'm young thinking, Portuguese coach there now. yeah, he Amran, doesn't know what do you make anything. of it? Like something like that. You do it to his You best. know? Something What are you like gonna that. do? Miracles is I impossible. think that's my We say in Portugal, miracles is only in Fatima. my problem. And Emotions take over me. I don't know if you know this. I should that stop this. expression. They start to smile because they know No, what I mean. I know, yeah. You know the Fatima? Of course. It's and you're not gonna do miracles. Even the players, Manchester United have good players, but they don't have some of them the mind. What is Manchester United is? You became a billionaire last week. I was the one that They're told wrong. you. I was the one that told you. Because I messaged you and It's not said, true. have you seen this? It's not true. It's not true? I'm a billionaire so many years ago. I knew you'd say that. I knew you'd say that. And you probably were, right? Yeah, with 39. And how did you know? Who told you? Please, I know my money, eh? Do you know exactly Of what you're course. worth? Really? Not precise 100%, but of course you have to take care of your stuff. It's normal, you know. I'm not like that to look, but I have people around me who help me, you know, to do the right things in all areas. But financial, I have a guy who I spoke almost every day, not about that, but about my structure, the investments, the opportunities, and I have control, you know, because it's my life, it's my money, you know. That moment when you realised you were a billionaire, what was that like? I knew it that this is what will happen, so I was prepared. It's a matter of time. So honestly, I was super happy. It's like when you won a golden ball because you make your own goals. You make your own goals. Everyone make these own goals to build a house, to have a car. Or it was my goal to reach that number. It was? Yes, honest. It's not. I'm not obsessed for the money because I think the money it can help you to in many ways, but when you reach some level the money doesn't matter anymore, in my opinion. But it's always good to have more because we are human beings, we are never happy with what we have. That is something that I learned during the time, that financial is important, the money is important, but other things that are more important than that. But to answer your question, I was super happy because it was one of the main goals that I had on my mind. A part of football, trophies, Champions League, Golden Balls, trophies, everything. Financial and in a business way, it was my goal. So with 39, I reached that number, and I was so proud, to be honest. And now the world has caught up, and Bloomberg did this report, and you were declared the first ever football billionaire. The first ever. And there are a very small number of sporting icons who have passed that mark in other sports. Tiger Woods, Roger Federer. You could talk about Michael Jordan. But there are very few, Cristiano. You In could football, I'm the only one. You're the only one in football. Does that mean a lot to you to be the only one? Well, don't surprise me a lot, because if you say the story of football and they can call me cocky or whatever, but the numbers, they don't lie. It's something that I'm always saying, and I will continue to say. If you see so many records in football, Cristiano is there on the top of the list, so it's one record more. So for me, don't surprise me, because I knew it
my potential in football and my potential outside the football, it don't surprise me, to be honest. I knew that I'm going to reach that number for many reasons. But deep inside I was happy. It's one of my goals, and my motivation is still to say, but money is continue is your motivation for football. No, but helps, in my opinion. Well, So- you said about records that you don't chase records, they chase you. In a way, the same applies to money, I would think, is that if you keep your performance levels at the level you've had Helps, them, of course. then obviously the brand is maintained, Exactly. the revenues come in, right? I mean, it's all performance related. This was my strategy a few years ago, and say if you continue to be in the top level and continue to perform, that number will reach to you. Because as you mentioned, good, everything it's together. You understand? So it was my plan. If you ask me, you thought that you will reach so quick? Probably no. But I knew that I will reach that. And it was good. Show me your left hand a minute. Which one? You want to see this or this? Well, I'm looking at both and thinking your left hand is probably worth more than I have in my life. No. And I'm not a poor man, Cristiano, but this arm is, It's not that much. I mean, this watch alone. When they see Cristiano, when they see the bright, they say, wow, Cristiano have that. But sometimes it's fake. But they don't realize because I'm Cristiano, nobody believes that it's fake. I'm joking. What is the most... It's a present. I cannot say no. People give me... Really? Georgina offered me this in the Christmas, and I have a sponsor with Jacob. So I didn't buy with my own money. I have the sponsor. You understand? What is the most expensive thing you've ever bought? Most expensive? Most expensive thing that I bought? A plane. A plane? Yes. I love the way you had to think about that. But it was. What kind of plane? I have my plane since I 13 years old, but I changed right now 1 year ago, so it's a little bit expensive. What model do you have now? I have a Global Express. Nice. I mean, that's a sign, isn't it? That's a moment when you have your own plane, isn't it? I had since I had 13 years old, so I have 10 years the plane, but I changed for a better one now. But as I say, Piers, for me I tell you before, the money gives you opportunity to have material things, which is good. But I'm in a moment of my life that for me I don't care anymore about that. For me, the most important things I want to live the next chapter of my life with not expensive costs, let's say in that way, because my dreams is already gone. I mean, when I was young, 20s until 30s, I used to love cars and everything, to drive. I'm not have that passion anymore. Planes I just have because I need, because I'm not a normal person. I cannot be in airports. I buy because of that. And of course let's say it's help me the word, like a comfort. Yeah. It's like a comfort. But I don't look for that anymore. I just want to be up, enjoy the life. As Carl Jung say, after the 14th, you really know and you start to live the life. And this is what I start to feel, that for me the money is good, but it's not important anymore. But you mentioned normality there, and you clearly can't lead what people would consider a normal life. You can't go where there are groups of people because you'll be mobbed and seen it. It's not ball. করতেছে হলো পিয়ার্স মর্গানের লগে রোনালদোর একটা ইন্টারভিউ আছে কয়দিন আগে, এটা বলে ভিতরে রোনালদো বলে কইছে যে ওয়ার্ল্ড কাপ কি জানি কইছে, ওয়ার্ল্ড কাপ রে লয়া যে বুয়া মুয়া কি জানি একটা কইছে ওয়ার্ল্ড কাপ রে, যে ওয়ার্ল্ড কাপ রে কি জানি কইছে, দেখি কি কয় আমি তো জানি না, মাত্র শুরু করলাম। আমি তো ক্লিপ দেখছিলাম, মাত্র ক্লিপের মধ্যে তো মনে হয় দেখছিলাম আপনার নাকি গায়
কইছে যে ওয়ার্ল্ড কাপের মধ্যে ইলে মানে কি করে ওয়ার্ল্ড কাপ জিতলেই যে বেস্ট প্লেয়ার হইবে এখন গলা না আর দুনিয়ার কোর্সে যায় বেস্ট প্লেয়ার এমন কিছু না এটা তো ভালো কথাই কইছে এটা কি ওই কইছে নাকি এআই তে চেঞ্জ করতে ভয়েস হ্যাঁ এটা জানি না কিন্তু এটা বললে তো ভালো হয় থাকে ভালো কথা কইছে খারাপ কথা কয় না কিন্তু রোনালদো কিন্তু আসলে অনেক ভালো পারফর্ম দিছে মেসির থেকে অনেক দিক দিয়ে ঠিক আছে নো ডাউট মেসি ইজ আ ভেরি রিয়েলি নাইস প্লেয়ার রিয়েলি গ্রেট প্লেয়ার কিন্তু রোনালদো আসলে অনেক কিছু করছে দেখা যাক এরা আমি কাটতে জানি শুনলাম আমি ক্লিপ দেখছিলাম এমন কি করছ তুই এখন কি করতেছি এখন ঢাকা বলে যাইব কেন ওই টাকা পয়সার লেগে টাকা পয়সা মোটামুটি অ্যারেঞ্জ করছি টাকা পয়সা কি এটা বাইকের লাইসেন্স হ্যাঁ বাইকের লাইসেন্স সরাইছি ওই অ্যাকাউন্টে তো সবাই আর পুরা ভর্তি অ্যাকাউন্টে পাঠাই দিছি আচ্ছা এখন মানে যে ওই লাভ লস না জেলা ম্যানেজার কিছু মানুষজন ধরা পড়ছে তো এদিকে ইন্সপেকশন আছে তো এই লেগে আমরা চুপ করে রেখেছি আমি আর ধরতেছি না পরশুদিন যাবো বুঝতে পারছি টাকা মাকা ওই মেন অ্যাকাউন্ট যেটা নাম্বার আছে ওই অ্যাকাউন্ট থেকে অনেক পুরা করা অ্যাকাউন্ট অনেক সরাইছে অনেক টাকা আর আছে মানে অ্যাকাউন্ট কি ফ্রিজেতে খোলা লাইছস ফ্রিজেতে টাকা খোলা লাইছি ও মানে এখন টাকা আর কি কিছু টাকা মানে দুই তিনটা অ্যাকাউন্টে পাঁচ ছয়টা মানে মাল্টিপল অ্যাকাউন্টে পাঠাইছস কিন্তু আর একটা আছে না মাল্টিপল অ্যাকাউন্টে পাঠা রাখছি কোনো বেশি টাকা আর কি আর ই করছ না বিবিওতে দিকলে এই টাকা এট লিস্ট থাকলো আর কি হ্যাঁ বুঝছি হ্যাঁ আর হন কত হলো তুই কি আর হেল্প করতে পারবি না আমারে কি হেল্প তুই আমারে কি 2000 টাকা পাঠাতে পারবি না 2000 টাকা হ্যাঁ 2000 টাকা পারবো পাঠাইতে আর একটু বেশি করলে পারতাম না আর 2000 টাকা একটু পাঠা আমি যে আমার হাত চলার মতো টাকা নেই লুমু ম্যানেজার কইতেছে আপনি গুড়াগাড়া অ্যাকাউন্ট একটু আপাতত উড়েন না একটু যে জানালাটা যা খেয়ে পড়ে আমি বলছি তাহলে পরশুদিন আইতাছি পরশুদিন আমার কিছু ক্যাশ দিবে না ও স্যার সবে ক্যাশ লিয়ে যা কেলে অল টাকা নাই না ক্যাশ দিব তোরে হ্যাঁ দেখি তোর এই ওই তোর বিকাশ তো পাইছি 20 টাকা এক কোটি না ভাই 2000 টাকা ক্যাশ নুমু কত মানে আমার গলায় কি সমস্যা 30 লাখ না একটু ক্যাশ করতেছে কি জানি আমি 1 কোটি কই নাই আমি কইছি কি কইছি এটাও ভুলে গেছি এর লেগে কইতে পারতেছি 30 লাখের মতো আর কি ও ক্যাশ লোন ওই যে বাইক কিনতে গো ওই তোরে ক্যাশ দিব কেন বাইক কিনবি ওকে সেই ক্যাশ দিব কি মানে তুই আমার লেগে 1 লাখ টাকা রাখিস ভাই 23 লাখ টাকা মানে ক্যাশ দিব কেন হয় কি তোর বন্ধু আমার বন্ধু ও না তুই যে অ্যাকাউন্টে পাঠাইছস সেই অ্যাকাউন্টে উইথড্র করতে যাবি আর কি নাকি হ্যাঁ 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 এটা ম্যানেজারই করে দিব কেন নাই এই যে মানে ব্র্যাক ব্যাংকের যে নাম জানি কি কাজ শান্তিনগর ব্রাঞ্চ আছে না মেইন কর্পোরেট ব্রাঞ্চ এই ব্রাঞ্চের ম্যানেজার এলো ওই আয়ুষ ভাইয়ের পরিচিত আর কইছে আর এই পরিমাণ কাট দিব হ্যাঁ পরে একটু নেগোশিয়েট করে রাজি হয়েছে ওকে ওকে দাঁড়া একটা মিনিট কলেই থাক তুই আছি আমি তুই কই এখন তো শ্বশুর বাড়ি আসস না না বাইক শ্বশুর বাড়ি যাস না দেশের অবস্থা খারাপ রে ভাই ককটেল বোমা মারা মারতেছস তোরা কস কি খবর দাস না আমি লিখেছে ককটেল বোমা মারতেছে আমি ককটেল বোমা মারতেছে আয় কি রে ভাই এবারে দেখ তো টের গেছে নাকি বুঝলাম না কাহিনী আমি তো পিন মন আয় হায় আমি তো পিন মন না দিতে গেছে গা বুঝলাম না আরে একটা ব্যাংক একটা টেক্সট আছে না ওই টেক্সটটা আমি ক্যান্সেল করছি দেখাল লেখা যে আমার কাছে কত টাকা আছে এখন দিয়ে গেছে গা বুঝলাম না
আচ্ছা তাহলে ওকে তুই করার মতো জায়গা আছিস কই তো পাই না তুই আমি ঢাকা যাই আজকে একটু টাকা তো কাম আছে ওকে আওয়ামী লীগের পোলাপাইন মারমু আজকে গস কি কোন আওয়ামী লীগের প্রভাবের মারবি তুই আওয়ামী লীগের আরে মারতাম না কইলাম আওয়ামী লীগের বেলা এই বোমা মোমা শুরু করছে ওকে এটি লেগে ঝামেলা টাকার কোন জানা এখন তুই ঢাকায় গিয়ে কি করবি আন্দোলন করবি কি একটা দাম কাম হ্যাঁ ওরা পাঁচার কাম আমি গেলে তো কথা ভাই বোমা মাইনা পুরো দেয়া শুরু আল্লাহ ব্র্যাক ব্যাংকের শান্তিনগর ব্রাঞ্চে কোনো বোমা মারিস আজকে ওকে ঠিক আছে দেখ কি করস তুই ওকে But having said that, you're probably the most normal billionaire superstar I know. Genuinely, you're just very regular. People always ask me about you. I go around and people come up to me all the time, and it's like, "What's Cristiano like? What's he really like? What's he really like?" And I say, "I'm Cristiano. He's just a normal guy. You know, we message a lot, and you're just a regular. You're like one of my mates, right? You don't carry with you the airs and graces of somebody who feels entitled to any of this. I get the feeling that you never forget where you came from. Probably your mother, I think, and your family. Make sure that doesn't happen. Gio probably does too. But I think you enjoy the trappings of your success. But I don't think it's changed you as a person at all. I think you are actually surprisingly normal. It's difficult when you speak about you. But as I told you before, and this is what I feel, I don't care, you know me, I don't care what people thinking about me, and if they say that I'm cocky, that I'm arrogant, I don't care, honest. With 14 years old, I have 5 kids, I have the best friends ever, I have the team that they help me a lot. Public opinion for me, it's not important anymore. I just want to be happy, to do what I like to do, to still maintain my level in football, score goals, which is still maintain me happy, and I'm still happy when I go training, compete in the training, and I think I'm a normal people. I don't spend money. For example, I'm not go shopping. If I go anywhere, I can buy whatever I want, but I don't need that anymore. Sometimes, let's say 3 days ago I buy a car, but it's for collection. It's like you buy a frame. I'm not gonna drive that car. It's like investment. What was the car? Mercedes. Sorry, I have Mercedes as well. I buy Bugatti as well, Tourbillon. But it's investment. How many cars have you got now? I don't know. You don't know how many I cars? don't count the cars. Serious, I don't count. I love how you make that sound so normal that you. But it's normal. You don't know how many cars. I don't want to be humble. It's a fact. 10, 20, 30, 40, 50? Yeah, maybe 50? 60? Honest, if you have to bet, I say, I don't know, 41, 40, I don't know. Pierce, I don't know. I swear for my kids. What's your favourite? I love the Bugattis. Yeah. Yes, I have a few, and they are different beasts. Did you ever drive these cars? I never drive. Really? I have, for example, I was 1 week in Madrid, and not even go my garage to see the cars if they are there. Just the day that I left, the 2 Bugattis went to the inspection, and they're coming back and just look at them. They're good, they're clean, they're good. They go to the garage. But it's honest. For me, the cars is not anymore a passion. Do you ever drive? Yes, You do? I drive. You Yeah. can drive around? I'm not driving a lot in Saudi because we used to training in the afternoon and I go always with the drive. And the traffic is terrible. And the traffic is terrible. But for example, when we're coming back to home, it's not traffic. So yesterday, you know, the Al Nassr, they have the sponsor with BMW, and all the players have a new car. So yesterday, I drive home with my new BMW home, but I've not drive like in Saudi like 1 year. Well, 6 months, let's say. You mentioned goals. You just scored 2 more goals for Portugal. You then got substituted in the 77th minute, and the opposition, Hungary, scored a last-minute equaliser. I can only imagine how you were feeling. I would have one rule if I was your coach.
if Cristiano has 2 goals, never stop him getting a hat-trick. Because I know you, and you would do anything in your power to win the game, but to get a hat-trick. So how did you feel about being yanked off without being able to score your hat-trick? Honest, even the goals. Sometimes we think the easy way will be the better way, but it's not. Sometimes I know what you mean, but I have to be in the mind of the coach as well. Maybe you want to keep the result to 1, to put another player to save the result that is fresh, that they can help to defend more the team. I understand. And a part of that, I have to agree with the coach because we are not all the same. We are not thinking the same way. So if I will stay, I will try to score the 3rd goal. But substitution sometimes is good. Even if you have 2 goals, it's not a problem for me anymore because I'm scored so many hat-tricks, so 1 more, 1 less for me. Your goal scoring record since you turned 30 is ridiculous. It's more than before you were 30. I mean, there's no player in history that has that. You've scored 948 career goals now. So last week... all with videos. Exactly. So there's proof. I've heard you say that. You're right. There's proof of every goal. Do you remember your first one? The first goal I scored professional. Yeah. Moreres, yes. What was the goal? You should see the goals. Is it good? Oh, unbelievable. Really? Oh, the second goal, the first goal, unbelievable goal. So you started with an absolute worldie. You didn't see this goal, the first one? No, maybe. Sim, mete no video para ver. I need a video of this goal. Unbelievable. It was the moment that the people say, listen, this guy gonna be a good player. Really? Yes. Okay, let's have a look at this. Bro, you're done already? Yeah, bro. How? I hired Motion to hire AI employees. AI employees? Oh, step over. Oh, First team. Wait, that's a banger. And the shirt came off. See that? Oh, what a goal. Even the commentators, they say, this is why these players that don't stay longer in our league. With 17, for me, is like, it was a big boom for me. Like, Did that feeling, that first goal, and it was a great goal, but that first goal, is that where you first got that rush where you were like, okay, I love this so much. you Look at this. This is give you confidence for yourself. You say, wow, I play with the men's. So they want to stop me. But even with 17, I was quicker than them, smarter than them, and score. This is where you start to feel that you're gonna be, I'm not gonna say golden ball, whatever, but a good professional player. Who's been your favourite player to watch ever? To mention one player, I think it's not... Is there one like if the television's on and there's a match and there's a certain player in the last 20, 30 years and you've gone, I've got to watch that because of this guy? I watch the game. I watch the players. To watch something because of one player, no. I watch, for example, Brazil because they have many players. They have Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Yes. I watch, I don't know, Argentina because of the players that they have. I watch Spain. I look in that way, not because of one player, honest. But I have to respect that in the history of football you have many great players and stars players, which is you enjoy more than the other ones, of course. But to follow a game only because one player, no. Could you imagine retiring? Yes. Have you got in your head an age when that may happen? Soon. But I think I will be prepared. Will be tough, of course. Will be difficult, yes. Probably I will cry, yes. Yeah, normal. And I'm easy guy to cry. I'm not keep my feelings. I'm honest. I'm open person. Oh, you are? Yes. Will be very difficult, yes. But please, I prepare my future since 25, 26, 27 years old. I prepare my future. So I think I will be capable to support that pressure
that What could bring you anything like the joy of football, of actually playing football? Because you clearly still love playing. What outside of football do you think could even come close to replacing that? Anything, or have you accepted? Nothing, I think. Yeah. Nothing will be compared. That the adrenaline that we have for football to score a goal will go this way. But as I say, everything have the beginning, everything have the end. So I think I will be prepared. I think. But I have other passions. I'm gonna have more time for me. I'm gonna have more time for my family, to raise my kids, especially the Bella that I have 3 years old. That I start to feel when I travel and stay so many days in Atlanta with the team, kind of a rush. I want to follow Cristiano Jr. because it's in the moment of the age that they're a little bit stupid, they do stupid things. Normal, because I did the same. I want to, Matteo, that I love football as well. I want to be a more family person, more present. Also, to have my own hobbies, which is I like to see UFC, the fights. I like paddle, for example. It's our main sport. I hear you're very good. Sport. I hear you're good at paddle. We learn, me and my friends, my closer friends. It's something that we've been together, unit, so it's good. I like and I want to learn something more about my companies, other stuff about, for example, I'm never going to be a YouTuber, of course, but you have got 76 million subscribers. I want to be there. And you got that in about 3 months. I mean, you say you're not going to be a YouTuber, you're one of the biggest YouTubers in the world. I struggled for 3 years to get to 4 million and thought I was a genius. You come along, and in about 3 minutes, so you maybe overtook me. I'm going to spend more time on that, to learn, to do more stuff. I think I'm going to do it the funny things and things that I'm not used to do it before, because as you know, for me, the perspective that I have, football is not only about to go to the training ground, training 1 hour and do treatments. I live football 24 hours, let's say in that way, to do it the right things, to perform, because by my age, the things is getting more difficult to recover fast, but I'm enjoying this process. It's nice that you see the life with the different eyes and with the different vision. You have the different ideas. For me, it's a good challenge. Even with my age, I'm enjoying this period of my life, because you learn so many things and you start thinking about other things, not only in football, and makes you happy. Which are the brands that you really enjoy working with? I know that you're big in real estate, for example. I know about your aftershave. I use it. It's very successful, I have to say. I mean, people go, well, you smell like Cristiano. So, you know. But you've got so many different things you're involved with. Which are the big ones for you that you're most engaged with, do you think? YouTube, we start to do a few things with the YouTube. The image is always there. As you say, the real estate is my really passion, and people that don't know that. I'm a challenge person in some business that people don't even dream about that. I mentioned off the interview. I'm a person that always wants to learn, not only in the business way, but also in a life, for the new chapter of my life, that you start to get a little bit more mature in some decisions. You have, I don't want to reveal a secret, but you have a video game room around the corner with about 8 consoles. And I noticed you've got an esports award there. I mean, you love all this stuff, don't you? Yeah, it's the future. As you mentioned, the esport, I'm ambassador of that huge event that they do it every year here in Saudi. I have to appreciate our boss, MBS. He gave me that opportunity to be the ambassador of the e-games, which is, if you never saw, you should be here to see. It's the great event. And I'm here in the country, of course, because of him as well. So it's a guy that I really respect, and I'm here because of him. So we do the fantastic things for the country, especially a game. Let's turn to the other more important deal you did recently.
Which one? I do your engagement to Gio. It's the most I important. mean, come on. Yeah, sorry. This is the biggest deal. If not, you kill me. Yes, it's true. No, you've managed to resist getting married No, to not resist. your 40s. Well, you haven't got married and you're 40, right? But finally, you proposed. So talk me through this. What made you decide to finally pop the question? I'm always saying the good things coming in the right time. And sometimes you need time to realize that you don't do some mistakes. I don't mean in that way. I'm gonna propose her because I think it's the moment. Not only because it's the mother of my kids, but it's the person that I'm love more. It's the love of my life. So I think it's the right moment. As you say, you're 14 years old. Nothing gonna change. Nothing gonna change just because we're gonna marry it. It's just a beautiful chapter of the life, you know. It's good. How did you propose? Was funny. I knew it that one day I will do that, but I don't know which way. You know, it's difficult. I don't know. You are married. Yes. When you propose your wife, you never know the moment, the scenario, the environment. And I'm always saying that the good things coming in a natural way. Football, life, opportunities, married, and it coming in a funny way. Because she asked me something, she asked me for a ring to offer her, because it was one of her dreams to have like a good stone. And I work hard, and I finally find what she loved. And I speak with my guy and I say, listen, keep it. We're gonna do it at dinner tonight. And after I'm gonna offer to her. And this is what we did. But something, after I stay with her alone, and one of my friends, they take the phone and filming, which is, they never did before. I know that friends, for 10 years, they never do this. Not even ask me to take a picture, imagine. And they filming me. I say, wow, weird. And after, it was like 1 o'clock, 1 a.m. My daughters was in the bed, sleeping, Alana and Eva. And my friend gave me the ring to offer Gio. I was given the ring, and my 2 girls coming, and they say, Daddy, you're gonna give the ring to Mom, and you're gonna ask her to be married. And I say, wow, it's the right moment to say yes. I say, yes. It wasn't a timing, and Gio didn't believe. Yes. I knew it that I will do it that one day. But you hadn't planned it for that? No. And it was the moment that my daughter's coming, and I say, yes, now is the time. This is what I want. And I offer. Because my daughter's saying that, my friends filming. And were they there, the daughters? They yes. Did you get on bended knee? I didn't do that because I was like, prepared. And it was a beautiful moment. Did you make a little speech, or did you just say? Yes, I did. You know, it was recorded. What kind of thing were you saying? I say simple. Please, come on. I'm not like romantic guy. I am. You sound very romantic. I'm not very romantic guy. I'm not that kind of guys. They bring flowers every week to the home. But this is a big moment. One per month, let's say, not every week. But I'm romantic in my way. You understand? But it was beautiful, and I knew it, that it was the woman of my life. So I did that, and I hope that I do it. Did she hesitate, or? Of course not. No, but one thing that I love it, she didn't care about the ring. She asked me if I speak the truth. Say, honest? Honest? Yes, honest. I want you, blah, 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 I want to marry you, blah, blah. But she didn't believe. But it was funny. Did you cry? I didn't cry, but I was like, because I see his reaction, I had tears on my eyes, yes. And was that because of the cost of the ring, or? Both. Oh,
I've seen that ring. Both. I mean, I've seen human beings get blinded by that ring when she walks It's around. big, it's big, I know. You last time we spoke, you'd gone through a very sad period as a family. You'd lost your baby son. You talked very movingly about that. That kind of experience can damage a relationship, or it can make it stronger. Clearly, in your case, it must have made things stronger for you. Do you feel that? I feel that we always support each other. Sometimes it's like in a relationship you have good moments, bad moments. It's part of the journey. But probably in that period we consolidate more the relationship because of what you say. But even this is something that I learned by the time. Even in the worst moments, you have to make the things smooth, you know, because not only when you are there in a good moment, that's not gonna come the bad moments. Try to find the balance for everything in the good moments, and then in the bad moments, back to the basic points, a baseline. And this is something that I learned. Was difficult periods, but it was nice. Honest, was nice, because I learned so many things. I saw or other perspective of the life. My daughter now, which is 3 years old, she's the queen of the family. She's the who make the house happy. You know, everything happened for a reason. I believe on that. So we are a blessed family. So I'm proud for that. For those who don't know Gia, I've had the pleasure of meeting her a few times. What is it about her that made her so special to you? Well, she has so many things, good things that I love it, that I believe she's unique in that way, which is she take care of me, which is very important. She take care of the family, she take care of the house, which is take a lot of work. If you want to be the opposite, will deal with that. Men cannot deal with that, honest. And she's special for me because a part of his qualities, beautiful body and everything that I like, she's a person that understands me and take care of me and my family. So this is what I'm looking for. Was your mom happy? You told her? Yes, I believe they are happy. My whole family. It's something that I think that it's good for all family, not just for my family, kids, wife, but also for my mom, brothers, sisters. I think they are all happy because they see that I'm a grown man now. So they are happy, and as I say, and I'm continue to repeat, it's a new chapter of the life. Do you have a wedding day yet? Not yet. We plan to do it after the World Cup with the trophy, but do you know where you want to get married? We didn't plan that because she is not the person that they like big parties. She don't like it. She like private things. So I will respect his decisions because I'm not. More importantly, have you decided on where the stag party is going to be, and can I come? Why not? Thank you, Cristiano. And let's do it interview. No. Jose, is he organising it, Jose? Jose organize everything. Our CEO organize everything. Have you got a stag party? I mean, what are we talking? A week somewhere? You are part of the family. Please. Thank you, Cristiano. Now you can earn PC Optimum points on all your DoorDash cravings. From late night munching to salad crunching, all your eligible restaurant and grocery orders now come with a side of PC Optimum points. Link your account and start earning today. PC Optimum and DoorDash, your door to earning more. I want to talk about another very sad thing that happened to you recently. You lost one of your Portugal colleagues, Diogo Jota, and it was an unbelievably shocking thing to happen. Where were you when you heard that he died with his brother in this crash? I was with Gio alone in our period of rest. I was there in the gym in the morning with Gio. I didn't believe when they sent me messaging. I'm cry a lot. Gio
can confirm that. I don't. It was very, very difficult moments for the country, for families, for friends, for teammates. Devastating. Very, very, very sad news. He's 28 years old. Yeah. At the peak of his game, he was playing at Liverpool. Everything was going so well for him, and just reminded you how fragile life can be, right? This is why something that I mentioned before, that you have to enjoy the moments and don't plan much to the future. This is why my guys, they can confirm I'm not planning now, not just because of that situation, but before also with my kids that happened. I'm not planning things with in the long terms, only short terms, because everything.
little bit of wick and it moved up. There was a trade there. Yeah, it can slowly push to 90. Buyers have already taken on 75. This candle, buyers has already taken over. This is the proof. What is this? 83, 84, 85, 86, 87, 30 more paper pushed up. For 90 to 1, can we get a pullback to 75? Let's see. A pullback to 75 is hard. Okay, I think I have a plan. About here with trades. Yeah, this has the potential to go 90. But why is this so slow? But this is a nice candle. Thing can change in one moment or another moment. So we have to be happy to be here and live the moments, enjoy the life, because the future only God knows. So, but it was a shock moment. We still feel the aura there in the national team when you put the shirt, because Diogo, it was one of us. What kind of guy was he? Very good guy, a quiet guy, a good player, as you know. But very, how you say, he's not a guy that speak too much. Or he was very, how you say the word? Level-headed? Yes, yeah. Yes. I really like it to meet him, to share with him so great moments. But was sad. I had the opportunity to speak with their family. And to give support, because it's these moments we cannot. Because he's a beautiful young wife and children and something. I mean, this was everything is gone because of one moment. So we have to enjoy the life. So it's hard. You didn't attend his funeral, and your sister responded to people who were sort of raising questions by saying on social media that you just didn't want to turn the whole thing into an unnecessary circus with too much attention on you. Is that really what you were thinking? Two things. People criticize me a lot. As I say, I don't care about that, because when you feel your conscience is good, free, you don't have to be worried about what the people say. But one of the things I don't do, it's
after my father died, I've never been in the cemetery Yeah. again. And second, as you say and you mentioned good, and you know me, and you know my reputation, wherever I go, it's a circus, you know. I don't go also because if I go, the attention go from me, and I don't want this kind of attentions. And I saw, and I'm not criticized, I just say that I didn't like it. When you go in some a sensitive It's pushing up nicely. moment Like buyers to do it have already interviews, taken over. to speak about him, to speak about football. Come on, guys, what is this? You know, this show I also could have closed. live sometimes. It was I'm not part of moving it. up without a wick. If you want to be part of this world, good luck. I'm gonna be another side. People can continue to criticize me, or they criticize mine, but it's gone already. I felt good with my decision. I don't need to be in the first line to people see me. They're gonna speak good because Cristiano is coming. No. I'm planning the things. I'm thinking about his family. I don't need to be in the cameras for the people see what I do. I do behind the scenes, my friends. I feel better than that. But they do it a big propaganda and big publicity by my name, but it's okay, no problem, I understand. And to change the conversation for funny way. If you want to enjoy in a birthday, don't invite me. Because if I go to your birthday, gonna be a big mess. No, that's fine with me. No, not. Don't invite me. You're gonna enjoy I'm more, gonna have a much big more party. without Cristiano. Trust me. I turned 60 this year, and I'm gonna. Don't invite me, please. Have a party, and I want you to come and ruin it. You can come and be the star of the show. The big dog's here. Don't invite me. Don't you Because worry. you're not gonna enjoy. No, I wouldn't. You know why? Because the people, they're gonna say to your friends, listen guys, Cristiano is coming. You don't know my friends. Don't take pictures. You don't know my friends. They're gonna drink 2 glasses of wine. My in the friends- middle of the night, they're gonna my say, friends- Cristiano, please take a picture with me. Yeah. Will be a big mess. My friends drink a lot more than 2 glasses of wine. First. Secondly, I will do anything for the Instagram, right? And you, at my party, of course, it's going to blow up the internet. I'll take any circus you want to bring. It's not a problem. No, I'm not gonna be. You're gonna enjoy more, trust me, please. The first interview we did in Turin, you were at Juventus, and you revealed a story which was really extraordinary. That when you were like 13, you were so hungry at the Sporting Lisbon Academy that you and a friend you go to a local McDonald's and you would hang around the back, and 2 ladies in the McDonald's would give you free burgers, and you were so grateful to them because you were so hungry, literally hungry, and we tried everything after that to find them. And then I hear that you were walking through an airport and you randomly, recently, you randomly Last bumped year. into one of them. Tell Last me year. about that. Well, it was a funny story. I land from Riyadh to Lisbon. When I take off there, we are in a private area. And one of my friends, they say, Cristiano, look what I see here. And I look at, you know when you see some person and you recognize straight away, even 20 years after. And I was with my kids and with Gio and everyone. And I give a big hug to the girl, and even my kids say, Daddy, what you do? And also Gio look at me, and I tell them the story. Should have held. And it was like a moment that I feel like, Should have hold my the life is a box of surprises. You never expect 100. this moment, and it was good. And I spoke with my friend. We already know who is the people, 100%, and pretty soon I will do something special. I promise. When I say something, I try to promise. And I will do it. 100%. না ভাই বলো কি অবস্থা আছে 1টা বাজে ওকে আয়ো Okay.
100%. And one of the person was that girl. That's which amazing. is we already have their What did she number. say when she saw you? Did she know that She a little bit on shock because she never expect that I will recognize her. In the same way, when she saw me, she says, Cristiano, maybe she not gonna not even speak with me. Did she realize you had been that boy who then... Yes. She did. And she tell me one thing. She say, Cristiano, you never imagine. Every time that you come to Portugal, I know because I work behind the scenes, and I plan to come in here to receive you, just to see you, and they always make me a part. And this moment, because one of the person that didn't come, I replace. This is why I come. And I was so happy. I said, listen, this is the life. The life is brilliant because of that, and it's all about moments, chapters and everything. And I said to my friends to keep our number, and we're gonna do it something. When I'm gonna have time, I'm gonna do it something beautiful and special for that people who helped me in that period. Amazing story. And what's even more incredible is that your new CEO at Al Nassr is a guy called Jose Semedo. He's standing right over there. And he was the other guy with you. Yes. Queuing up for the McDonald's from those ladies. He was 13, you were 13, and he was telling me a story, which says a lot about you, that he was actually going to be let go from the academy. And you, age 13, went to see the head of the academy, and you pleaded with him to keep your friend. And you added a 5th bed to a little dormitory of about 4 beds. It was very tight. You added a 5th bed, and he allowed your friend to stay. And he went on to become a professional footballer himself, played in the Premier League, played in other leagues, and came here and is now the new CEO of Al Nassr, and apparently doing very well. I think he told me that, actually. But what an amazing journey you two have been on. I think here you both are age 40. Well, when you were 14, you had no money, you were hungry, you were queuing for burgers, and now you're here together living the Look dream. the life, how brilliant it is. Amazing, huh? Wow, I love it. Sometimes when I'm thinking and speak about this kind of moments, I feel emotional, you know, because life is brilliant and God's make you in a place where you deserve. And I'm gonna make a challenge for you. I think you should probably make interview to him. Yes. Because you're gonna love it. He's a very, 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 very interesting guy. No, I've already got the It's headline. not because he's here with me, and he's not in CEO of Al Nassr because he's my friend, no. He have huge potential, and everyone's are surprised. It's easy when you are around a friend, people, to say that. But speak with other people, other ones, and they say the work that they do, the potential that they have, and one of the best qualities for me, I will always will put in the top, loyalty. Loyalty, honest, to then take nothing which is not belong to you. And these people is very rare in the world, especially in the football. Yeah. And especially when it's around a lot of money. And you don't buy these people in Carrefour or, you don't buy these people in Amazon. No. So I'm challenging you to make interview to you because it's a very, very interesting person. No, we've already discussed it. And in fact, we're going to call it The Truth About Cristiano, the real story, what he doesn't want the world to know. He's going Perfect. If you wait for 7 years for a trade to work out, have a look at USD CHF. It's giving a nice opportunity. USD CHF. Okay, let's take a look at it. God damn, this bitch is still moving. But this is a great opportunity to enter along on USD TRY. Great opportunity. Let's take a look at USD CHF. Wow, man, yeah, I this in this stream I saw this whole move play out, this entire move.
He's going to go public. And that Raja story was is like true. that. But he can mention so many stories, good ones. I know. He's actually a fascinating guy. He's a And fascinating guy. I know how important he's been to you since you were 14. But he made it clear to me that without you, he wouldn't have stayed at the academy, and he may never have played football professionally. So it's been a. I just do it my best. As you know, I'm a loyal guy too. So the loyal guy should be next to the loyal people. And this is what I did that I think they're supposed to do. But I was 12 years old. It's an amazing My thing mind to do. was like that. But I don't know how to explain. You know, sometimes in life you do it, or you do it mistakes, or you do it good things that you not even realize that what is correct and what is false. But I did what I think it was correct, and not because in that moment, of course, in that moment I like him, but not like now. Now it's like part of my family. I don't need to say that. But tell you as well, Pierce, my people around me, they are fantastic people. Yeah, I know. I'm lucky, not just Semedo, because Semedo is one of the best, but also I have other people I know on my many of team. them. He's They're a good special guy, but I'm lucky. I'm lucky, but also the lucky, to have lucky, it brings effort. You need effort. And many of the guys who are with me, it's the guys that I invite him to come to be next to me. It's not like the family. Family, you're born with that family. Friends or people who worked with you or with you, they are different. Sometimes you need to choose. I call it the 4 a.m. club. And what I mean is, 4 a.m. club. Who could you call, who could you call at 4 a.m. Yes, okay. and they would get out of bed and they'd come and help? These people. I know your guys, and they're fantastic. Incredibly loyal to you, very protective, rightly. Yeah, but I think they feel the same about you. And that's what's unusual. They have great respect for you. Yeah, what we take from this life? It's family and friends, you know, relationships. Just push it up like crazy. Whatever you have, if you don't have good people around you, you're not gonna be happy. So this is what I think. And I repeat, I'm a lucky guy that, not because I have good family, but I also have very, very, very good friends. Not just because they work for me, I call them my friends because anyway, they are friends. Even if they want other challenge, I'm never gonna close that door, but they always will be my friends. So for me, it's a blessing. Tell me about your fitness, because I look good? You're looking very good. I mean, obviously you haven't got these abdominals, we've addressed that before, but you're working at it, and I think you're making good progress. Are they like, do you mind if I just, yeah, it's like hitting granite, not quite the same, not quite the same here, but they say you've got a body of like a 28-year-old, that's what I've read, but that's what your team all think, right? Do you feel that? I mean, do you feel that you don't look 40, and you don't have the physique of a 40-year-old? No, I'm not. Physically, I think I look much more younger, of course, because my hand is itching to enter again. Gym since 12, 13, 14, 15. Do you go every day? Do you do something every day? No, not every day, but I try to maintain a consistency in my life. But do you do something every day? Do you do something physical? I sleep good, I do good routines, I do a good recover, I work good in the gym 2-3 times per week of weights, 2 times per week for me is enough. I burn because of football, you know. It's just consistency. If you have consistency, it's easy, trust me. Which athletes in modern history do you look at as great examples that have maybe inspired you in terms of the way they take care of themselves? Inspiring me? Inspiring you, yeah. Inspiring by myself. No, who have you looked at where you think... I saw good examples in other sports as well. For example, I don't know, basketball, LeBron James. I think we are the same age. I met him the other day. Very nice guy. I have more hair than him. You do, and he's learning golf, but he's not very good. Now's a good time to play him at golf. But I think it's good because he still play football, basketball, and he's in a good shape. Other ones, Modric, still looking good. Yeah.
What's he, 41 now, Modric? Well, now is my age. Okay. I think 39, 40s. I saw Djokovic. Well, I was going to tennis. say, so Novak is here, who's playing in the Six Kings thing, and he said yesterday, you're one of his role models. He named you for wanting to continue playing into his 40s, because they all saying, look, now that Sinner and Alcaraz are kind of the new top guys, will you retire? And he's like, actually, I want to keep going. I want to keep proving to myself I can keep going. And he named you as the example, so you're inspiring him. That probably feels good, right? To inspire the greatest tennis player in history. I think it's good when you have other sports, other people, they speak good about your name. It means a lot. And Novak is a great example of greatness in the sport. So it's good. I'm glad from his work. जी मिस्टर खान साहब बिल्कुल Hi, good afternoon. Guess absent. I'm good. What about you guys? क्या चल रहा है? I'm good. What about you guys? क्या चल? I'm good. What about you guys? क्या चल रहा है? देखो डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है. मॉर्निंग में प्राइस ने एक हाई लगाया था जो हमारी कैंडल की ओपनिंग थी, दैट वाज अ मारुबोजू ओपन. ठीक है, उसके बाद प्राइस एक लो लगा के आया, वहाँ से प्राइस दोबारा से बाउंस बैक कर रहा है. नाउ इट इज़ अगेन टर्निंग इनटू ग्रीन. तो अभी फ़िलहाल जो बायर्स के साइड का पलड़ा है वो ज़्यादा भारी है. और अगर आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर भी देखते हो, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर प्राइस काइंड ऑफ डबल बॉटम बना रहा है. 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी प्राइस ने डबल बॉटम बना के आपको अच्छा मूव ऑलरेडी दिखा दिया है. ये जो 4 आवर्स की कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, दैट इज़ 1 आवर डबल बॉटम कैंडल. ठीक है, अभी यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर एक ये मैटर बन रहा है. यहाँ पर इस कैंडल का क्लोजिंग है और इस कैंडल का ओपनिंग है. तो यहाँ पर एक जोन बन रहा है जहाँ पर प्राइस रिएक्ट कर सकता है. अगर आप यहाँ पर देखो तो प्रीवियस कैंडल की बॉडी ऑलमोस्ट एनगल्फ कर दिया हमारी इस कैंडल ने, शोइंग कि हमारे यहाँ पर बायर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग है. सो अब यहाँ पर हमको जो भी रिजेक्शन मिलती है, वट एवर रिजेक्शन वी विल गेट, वी विल प्लान अ बाइंग एंट्री बिकॉज दिस सिनेरियो सीम्स टूवर्ड्स बुल साइड. तो हम एक डिप डाउन का वेट करेंगे एंड ऑन दैट डिप डाउन वी विल बी प्लानिंग अ बाइंग एंट्री. बिल्कुल किंग ट्रेडर, वी विल ट्राई आवर बेस्ट. अब ये 15 मिनट्स के ऊपर क्लोजिंग होने वाली है. कैंडल ने अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है. लेट इट टेक अ रिजेक्शन एट दिस वेरी पॉइंट. एक रिजेक्शन लेने दो, एक डिप डाउन लेने दो इसको. हम उस डिप डाउन के ऊपर एक बाइंग की एंट्री प्लान कर सकते हैं. ठीक है, She's telling about buys. This is 90. Okay. यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि प्राइस ने अपने लोअर हाइस मेंटेन किए हुए हैं. अनदर लोअर हाई इट इज मेंटेनिंग. एक भी लोअर हाई अभी तक ब्रेक नहीं किया है. मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखो तो प्राइस ने प्रीवियस में इस लेवल्स पर रिएक्ट किया हुआ है. सो दिस कैन बी अ जोन. 5 मिनट्स पर भी देखो तो यहाँ पर अच्छी कैंडल बनी हुई है. अगर हमको यहाँ पर मिलता है एक एंट्री पॉइंट, एक कैंडल रिएक्ट करती है, द कैंडल शुड कम डाउन, शुड टर्न बैक इनटू ग्रीन, तो फिर हम लोग यहाँ से एक बाइंग की एंट्री देखते हैं.
प्राइस ओपन हो गया है 1 आवर के ऊपर, ऑलरेडी कैंडल ओपन अप है। एक कंफर्मेशन का वेट करना रहेगा, देन वी विल प्लान आवर एंट्री। आई हैड टू कन्विंस आफ्टर शोइंग द आउटपुट मिस्टर ऋषिकेश। क्यों नहीं हो रहा है मिस्टर लक्की सिंह? आप मेरी टीम को मैसेज कीजिए, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी डेफिनेटली। बीटीसी पे देख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, स्लो तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है आपको प्राइस, इट इज जस्ट रेंज बाउंड। पीटीसी लो लगा चुका है 92,000 का, और एक बहुत अच्छा लेवल है ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, जहाँ से प्राइस अब बाइंग ले रहा है। आप यहाँ पर देखो प्राइस ने प्रीवियस में यहाँ पर काफ़ी होल्ड लिया, उसके बाद यहीं से आपको एक अच्छी बुल रैली दिखाई है। तो सिमिलरली दिस इज अ गुड जोन जहाँ से प्राइस आपको एक अगेन बाइंग दिखा सकता है। सो यहीं से प्राइस ने बिहेव करना शुरू किया है। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है ये, अगर ये इसका हाई ब्रेक कर देता है प्राइस, तो फिर आप इसके ऊपर बाय अबव बना सकते हैं, एटलीस्ट इस कैंडल के हाई तक का। जो ये हमारी एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी हुई है, इसके हाई तक का आप अपना टारगेट रख सकते हैं, बाय अबव बना सकते हैं 96,797.43। कमिंग टू इंटरडे फॉर बीटीसी। इंटरडे के ऊपर अगर आप देखो तो प्राइस ने अपने लो हाइस्ट मेंटेन किए हुए हैं। ये एक जोन बना हुआ है जहां से प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो यही वो जोन है। अगर प्राइस इसको क्रॉस करता है, इसके ऊपर एक अच्छी आपको क्लोजिंग दे देता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो आप बाय अबव बना सकते हैं। टिल व्हाट लेवल? टिल दिस लेवल जहां से प्राइस ने ये रिजेक्शन लिया होगा। आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करने को मिल जाएंगे बीटीसी के अंदर, बट इसके अंदर बाइंग अब बाय अबव बनाने का ही फायदा है, बिकॉज ये एक जोन अच्छा रेजिस्टेंस का है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखो तो ओवरऑल जो मेजर ट्रेंड है दैट इज बेरिश। यस द प्राइस इज टेकिंग अ डिमांड, प्राइस डेली टाइम फ्रेम से डिमांड लेवल पर आया, वहां से प्राइस ने रिएक्ट करना शुरू किया है। बट अंटिल एंड अनलेस आपको ये कंफर्मेशन नहीं देता, अंटिल एंड अनलेस इसका हाई ब्रेक नहीं करता, यू कैन नॉट प्लान योर बाइंग एंट्री, आई विल सजेस्ट। ठीक है, तो इंट्राडे के ऊपर आप क्या कर सकते हो? बाय अबव बना सकते हो। यू कैन कैप्चर अ गुड अमाउंट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम दिस एरिया बाय अबव। ठीक है, कमिंग बैक टू गोल्ड, 1 आवर की कैंडल कन्वर्ट बैक करिए, नॉट अ गुड टाइम। वन आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ना अभी ये लेवल बनता है जहाँ से प्राइस ने प्रीवियस में रिएक्ट किया हुआ है, एक ब्रेकआउट दिया है। सो अगर प्राइस यहाँ तक का रीटेस्ट लेता है इस कैंडल के हाई तक का, जो ये कैंडल का ओपन है, अगर प्राइस यहाँ तक आता है दैट इज 4078 और 79, वी कैन प्लान 1 बाइंग एंट्री फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पता है एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन भी आ रही है, दैट इज व्हाट द प्राइस इज टेकिंग द रिजेक्शन फ्रॉम दिस वेरी लेवल। अगर आप यहाँ पर देखो तो एक रेजिस्टेंस लाइन है, प्राइस ने प्रॉपरली उसको रिस्पेक्ट किया है, ले रहा है रिजेक्शन। अगर ये यहाँ तक रिजेक्शन लेता है एंड इट रिएक्ट्स एट दिस लेवल, अगर हमको 15 मिनट्स पर यहाँ पर एक ग्रीन क्लोजिंग मिलती है, तो फिर हम लोग यहाँ से बाइंग बनाएंगे। ठीक है, प्राइस ने यहाँ से एक प्रॉपर रिजेक्शन लिया है, एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही थी यहाँ पर, एक इसका मेजर लेवल ऑफ रिजेक्शन ये बनता है, एक इसका एक smaller level of rejection was this level, the price has taken the rejection from this level, अपने lower highs maintain कर रहा है gold, so we will find one entry at this very point 15 minutes पे 5 minutes पर अगर हमको एक green closing मिलती है, तो फिर ये वाला जो move आया हुआ है आपका, जो एक major move आपको देखने को मिल रहा है towards bull side, उसका एक retracement हो जाएगा जहाँ से price फिर से आपको एक bounce back दिखा सकता है। ठीक है, क्यों नहीं कर रही है मिस्टर लकी? I will ask them, they will help you out। कुछ क्या हुआ है, क्यों डिपॉजिट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है? इथेरियम लॉन्ग किया है आपने? ठीक है, बीटीसी एंड इथेरियम दोनों फिलहाल के बुलिश साइड ही दिख रहे हैं। I'm smelling something. Hopefully, Sakshi ji, definitely we will try our best. Okay, forex and chill. स्कैल्पिंग को लेकर मैं क्या सोचती हूँ, मतलब these candles. A quick scalp, हाँ, my wish. 20 pip and running. Look at these candles.
40 pip, 40 pip, 40 pip. वरना ये कैंडल कन्वर्ट बैक कर रही है. It is converting into red. 15 minutes पे still 8 minutes remaining for the candle to get closed. 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर 1 घंटा बच रहा है. 1 hour 38 minutes yet remaining. एक लेवल ऑफ रिजेक्शन है, एक छोटी सी रेजिस्टेंस लाइन है जहाँ से प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है. I don't think buying is option anymore, but if she takes a buy, I'm gonna take a buy. Cause पेमेंट फेल क्यों हो रही है? पेमेंट फेल तो नहीं होनी चाहिए. आपके बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम होगा. वेदर इज गुड ओवर हियर. वेदर अच्छा है यहाँ पे. 25-27 डिग्रीज तक ही रहता है मैक्सिमम. oh, 75 is a good level. यूरो यूएसडी अभी बता देती हूँ. 75, 78. ओके, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर प्राइस ने इस गैप को फिल किया, वहाँ से बाउंस लिया. नाउ इट इज अगेन मेंटेनिंग इट्स लोअर हाई. ओवरऑल जो ट्रेंड है हमारा यूरो यूएसडी का वो बेरिश चल रहा है. प्राइस अपने लोअर हाइज मेंटेन कर रहा है. सिमिलरली दिस टाइम आल्सो लोअर हाई हैज बीन मेंटेन्ड. तो मैं तो आपको बोलूँगी अगर आप मेजरली जाना चाहते हैं यू कैन गो टुवर्ड्स बेयर साइड जब तक प्राइस यहाँ पर डबल बॉटम क्रिएट. Eve to me is basically freedom. It's a giant open universe where you can do whatever you. स्मॉलर टाइम फ्रेम पर यू शुड थिंक टुवर्ड्स सेल साइड. ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक तो मैं प्राइस एक्सपेक्ट कर रही हूँ. 1.15504 यहाँ तक तो प्राइस बेरिश होना चाहिए. अपने लोअर हाइज इसने मेंटेन किए हुए हैं इवन ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम एज वेल. तो इस तरीके के राइजेस के ऊपर आप अपनी सेलिंग की एंट्रीज प्लान कर सकते हैं. दिस इज माई व्यू फॉर यूरो यूएसडी. जीबीपी यूएसडी काफ़ी ज़्यादा हॉच पॉच है फिलहाल के लिए. एक जोन ऑफ डिमांड है. प्राइस ने उसके नीचे से लिक्विडिटी उठाई, प्राइस उसके ऊपर आया दोबारा से, बट इट इज़ जस्ट सस्टेनिंग एट दिस वेरी पॉइंट. तो बहुत ज़्यादा हॉच पॉच है इधर. आप कुछ भी ट्रेड फिलहाल के लिए प्लान नहीं कर सकते जब तक आपको एक क्लियर कंफर्मेशन नहीं मिल जाती कि प्राइस या तो यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट करे या फिर इसका हाई ब्रेक करके आपको एक अच्छी बाइंग दिखाए टू गो टुवर्ड्स बाय साइड. राइट नाउ जीबीपी यूएसडी अच्छा नहीं लग रहा है प्लान करने के लिए कोई भी एंट्री. कमिंग बैक टू गोलीबाजी. 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. प्राइस ने लो लगा दिया है टिल 81 से 84 का मूव ले लिया प्राइस. यही जोन्स हैं, ये कहीं से भी बाउंस कर सकता है. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा और नीचे आए क्योंकि 15 मिनट पर और 1 घंटे पे यही लेवल बनता है. एक अच्छा लेवल बन रहा है बाइंग का 78-79 का लेवल. It should not take the bounce from this very level. चलो let's see how this candle of 15 minute closes. अभी तो 5 मिनट की कैंडल और बाकी है. Let us wait and watch. जोन्स में विक मार्क होती है मिस्टर मलिक यूट्यूब. फिबो लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. मान लो आपको इस मूव के लिए फिबोनाची ड्रॉ करना है. फॉर एग्जांपल ये आपको बाइंग का मूव दिखाई दे रहा है तो आप फिबोनाची को सिलेक्ट करेंगे. बॉटम से लेकर टॉप तक ये मूव आपको कहाँ तक दिखाई दे रहा है? यहाँ तक का हाई है. विक से आप मार्क करते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप. अब इसका जोन ऑफ गोल्डन जोन क्या बन रहा है? 0.5 से 0.618 को हम गोल्डन जोन बनता है. सो दिस इज द लेवल. तो इस मूव का प्राइस एक हेल्दी रिट्रेसमेंट ले लेगा 50% तक या फिर 0.618 तक. तो आप यहाँ से आप अनदर बाइंग की एंट्री प्लान कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर फिबोनाची. इस तरीके से आप अपना फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं. ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है. ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ फिबोनाची ड्रॉ करा और उसके गोल्डन जोन पर आया आपने वहाँ से बाइंग शुरू कर दी. ऐसा नहीं होता. आपको कम से कम 3 से 4 कंफर्मेशंस और चाहिए कि क्या पूरा का पूरा ट्रेंड हमारा जो है वो बुलिश है या नहीं है. हमको जो एंट्रीज दिखाई दे रही हैं वो बुल साइड की हैं या नहीं है. सो यू नीड एटलीस्ट 4 to 5 कंफर्मेशन बिफोर प्लानिंग अ ट्रेड. फिबोनाची कैन बी वन ऑफ योर कंफर्मेशन बट नॉट ओनली कंफर्मेशन. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फिबोनाची के बेसिस पर ही ट्रेड कर सकते हो. अब यहाँ पर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो तो मामला पूरा बुलिश है. यहाँ पर अगर इस तरीके से वेट करता है, सस्टेन करता है प्राइस तो वेल एंड गुड.
वी नीड अ सस्टेनेबिलिटी ऑफ समथिंग लाइक दिस। ले रहा है, नीचे से बाउंसेस आ रहे हैं, दिस इज़ अ गुड लेवल ऑफ 1 आवर टाइम फ्रेम। बट जिस हिसाब से कैंडल पलटी है थोड़ा सा मूड कम है। 4 घंटे पे क्या हिसाब है? 4 घंटे मस्त बेरिश मोमेंटम दे रहा है गाइस। वेट करते हैं इस 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग का। A good green candle of somewhat like this will be our entry point. एक कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ यहाँ से बाइंग प्रेशर आ रहा है। Yeah, we should wait, Mohammed ji. We are waiting. Mr. Gopi Gill, you can contact my team. They will help you out. ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 days is such a long time. एक दिन लगता है मैक्सिमम। मुझे दुबई, मैं 28 अक्टूबर को आई थी दुबई से वापस। राइट नाउ आई एम इन थाईलैंड। एक मिनट के ऊपर प्राइस कर रहा है सस्टेन। अच्छी कंफ्यूजन सी क्रिएट कर दी है प्राइस ने इस लेवल्स पर। तो लास्ट मिनट 15 मिनट का क्लोजिंग का। ओके, सो 15 मिनट्स बाद कैंडल हैज़ बीन क्लोज। अभी देखते हैं ओपन किस तरीके से करती है। हल्का सा भी लोड लगाती है तो फिर वी कैन प्लान। अरे बाप रे, क्या ही मोमेंटम है। लुक एट दीज विक्स। अरे अरे गाइस, वी कैन प्लान वन एंट्री एट दिस वेरी पॉइंट। इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 76 का। आने तो इसको थोड़ा सा और नीचे आता है तो जहाँ जितना नीचे एंट्री मिले बेटर, वेल एंड गुड। सो हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा। इसके हाई तक हमारा टारगेट रहेगा।
एसएल थोड़ा सा बड़ा बन रहा है तो अपनी क्वांटिटी आप हाफ रख सकते हैं. दिस विल बी आवर टारगेट पॉइंट, जो ये रेजिस्टेंस लाइन है. ठीक है, प्लानिंग दिस ट्रेड ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, जो मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रीम से बोल रही हूँ कि मैं 78 के आसपास में एक ट्रेड देख रही हूँ. ठीक है, सो 81.378 एंट्री पॉइंट. जिनको एंट्री नहीं मिले तो वो यहाँ पर दोबारा से प्राइस आ रहा है, एंट्री ले सकते हैं. यहाँ के हाई तक का हमारा टारगेट रहेगा एंड दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस बिलो दीज विक्स ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम. थोड़ा सा बफर किया है इधर. ठीक है, नाउ लेट अस सी, वेट एंड वॉच. यू गाइस कैन गो विद योर हाफ क्वांटिटीज बिकॉज इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बन रहा है. So now let's wait and watch what does the gold do over here. प्राइस 2 बार आया है हमारे एंट्री पॉइंट पर. वीआईपी ज्वाइन करने के लिए आपको नॉर्मल टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा. उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडमिन आईडी है मल्लिका खुराना करके. यू कैन टैप एट दैट आईडी. ओके, लेट अस वेट एंड वॉच. 15 मिनट्स की कैंडल हमारी ओपन हुई है. काफ़ी अच्छी ओपनिंग है इसकी. होपफुली इट शुड क्रॉस दिस लेवल. Sorry. Go with the half quantities because इसमें stop loss थोड़ा सा बड़ा बन रहा है guys. मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, एक लिंक दे देती हूँ मैं आपको. आप उस लिंक से डायरेक्ट देख सकते हैं कि आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं वीआईपी एंड ऑल. Hey. 1.1. That trade I closed by mistake. $3. अभी देखते हैं यूएस ऑयल. मैंने यहाँ पर एक लिंक पिन किया है. यू गाइस कैन डायरेक्टली ज्वाइन दिस लिंक. आपको इसके अंदर पिन्ड मैसेज के अंदर मिल जाएगा कि आप कैसे वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं. वापस से प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट पे आ चुका है आफ्टर शोइंग 30 पिप्स. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. फिफ्टीन मिनट्स पे इस कैंडल को बफर करके थोड़ा सा स्टॉप लॉस प्लेस किया गया है. यू कैन गो विद योर हाफ क्वांटिटीज बिकॉज इट इज अ बिट हाई एसएल. ठीक है, नाउ लेट अस वेट एंड वॉच. लेट द गोल्डी पाजी शो इट्स जलवा टू अस. बीटीसी फिलहाल के लिए बुलिश दिख रहा है. अनीश राजरी. मिस्टर निमेश, आई विल बी एक्टिव वेरी सून. दैट्स नॉट नेसेसरी कि आप दुबई में ही रहो मिस्टर मयूरेश. वो आप कहीं पर भी रह सकते हैं. मतलब यू हैव टू स्टे आउट ऑफ इंडिया फॉर 184 और 185 डेज, बट दैट्स नॉट नेसेसरी कि आप दुबई में ही रहो. तो वो आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी रह सकते हैं, बस इंडिया से बाहर होना चाहिए. अरे बाप रे, सेलर्स कंटिन्यू कर रहे हैं अपने आप. ये तो ऐसे लगी भाई. बस बफर ही बचा हुआ है. वो उस बफर नहीं बचा है. लेट्स सी. खतरनाक चल रहा है मामला यहाँ. एसएल की 76.
1 मिनट की कैंडल बहुत ही बड़ी बनी है, पर ठीक है, यहाँ पर है थोड़ी बहुत पावर टुवर्ड्स द बाय साइड बिकॉज बहुत सारी विक्स हैं प्रीवियस के अंदर यहाँ पे ऑन 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, दैट इज़ वाई थोड़ा सा बफर किया था इसे. लेट्स वेट एंड वॉच गाइस. अगर ये 7 मिनट सर्वाइव हो गए तो फिर मज़ा आ जाएगा. बोलो लक्की जी, क्या बात है? मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू जस्ट मेंशन योर प्रॉब्लम टू देम. मैंने तुमको स्पेशली बोला था कि हमने इस 15 मिनट्स की कैंडल को बफर करके स्टॉप लॉस प्लेस करना है. मैंने तुम्हें कैंडल भी बोली थी, अब तो मैं नंबर के ऊपर तो मैं तुम्हें बोल ही नहीं रही कि रहो. लुक एट दिस गाइस, इतना स्ट्रांगली बफर्ड है ये, एंड ये वापस पलटेगा तो यहाँ से बहुत ज़बरदस्त निकलेगा. लुक एट दिस कैंडल, पूरी की पूरी टर्न बैक कर रही है. पूरी 5 मिनट की कैंडल इज रिवर्टिंग बैक बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड जोन. आप यहाँ पर विक्स देखो ना, ये देखो, ये विक एरिया है, कितना स्ट्रॉन्ग विक एरिया है. ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप था जहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक किया है. आप लोगों के सामने मैंने एसएल प्लेस किया, आप लोगों के सामने मैंने आपको बोला है कि दैट यू हैव टू बफर दिस कैंडल. मैं आपको कैंडल्स तक बोल रही हूँ तो अब तो यू कैन नॉट कंप्लेन ना. आई टोल्ड यू कि मैंने इस कैंडल को बफर करके स्टॉप लॉस प्लेस किया है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. मैंने आपको कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं बोला है कि आप मुझे बोलो कि मैम नंबर से चला गया. मैं तुम्हें कैंडल्स के बफर भी बोल रही हूँ. हाँ, नहीं गया है एसएल जी, बिल्कुल बच गया है एसएल डेफिनेटली. उसी के लिए बफर बोलती हूँ मिस्टर LAB, आपके स्प्रेड के लिए ही मैं बफर बोलती हूँ. आप जीरो स्प्रेड अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, दैट वुड बी मच बेटर. आप 4050 से होल्ड कर रहे हैं, सो यस यू कैन. Yeah, that we will see, Mr. Mahadev. That's definitely can be the point. एक ही चीज़ होती है इसमें, either towards win side or towards this loss side. So we will accept both. There is no matter of that. मार्केट क्रैश होगा, बहुत टाइम से सुन रही हूँ यार मार्केट क्रैश होगा. बाकी गोल्ड के अंदर आपको एक अच्छा बेयर मूव ऑलरेडी देखने को मिला हुआ है. अगर आप देखो यहाँ से एक अच्छा हेल्दी रिजेक्शन लिया प्राइस ने, डबल बॉटम क्रिएट किया, डबल बॉटम क्रिएट करके प्राइस ने फिर से एक हाई लगाया एंड नाउ इट इज टेकिंग द रिजेक्शन फ्रॉम दिस वेरी लेवल, जो कि हमारा फिबोनाची का 0.618 का लेवल भी है अगर आप यहाँ से ड्रॉ करके देखते हैं तो. सो इट कैन कंटिन्यू टुवर्ड्स द सेल साइड डेफिनेटली, बट आज के दिन के लिए तो हमारे को जो कैंडल दिखाई दे रही थी दैट वाज बुलिश. तांडव तो कर रहा है प्राइस यहाँ पे. लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस. अनदर 4 मिनट्स, 5 मिनट्स में ये कैंडल भी क्लोज कर जाएगी. Yeah, it can, guys. It's okay. We will accept both, whatever it will be. हम लोग एक रिकवरी ट्रेड लगाएंगे and we will recover the loss definitely. Not even see if it is weak or not. एक मिनट पे प्राइस ने यहाँ पर इस तरीके से होल्ड करके आपको एक बुल रन तो दिखाया है, समवट लाइक दिस. सो इफ इट होल्ड्स एट दिस वेरी पॉइंट तो भी आपको एक ऐसा मूव देखने को मिल सकता है. Fake hopes. ओवरऑल माजरा. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. But getting एक ही कैंडल आएगी इस तरीके की बस एंड इट विल कम बैक.
4072 that we will see. अभी 72 तो नहीं, फिर एक मेजर जो जोन ऑफ बाइंग बनेगा वो फिर नीचे ही है थोड़ा, वो अभी यहाँ पर नहीं है पास में, बिकॉज जो लेवल बनता था वो यही था 7879। अगर प्राइस इसको ब्रीच करता है तो फिर थोड़ा सा और नीचे जाके बनेगा। अभी तो मस्त नाइस मिस्टर विशाल, गुड। Dummy, trigger dummy. नया लोअर लो बना दिया इसने। पूरी ट्राई ले रहा है बट दम नहीं दिख रहा है। विक्स देखो आप नीचे से फुल फाइट किया है इधर प्राइस में। चलो ठीक है, इट्स ओके, लेट इट बी, लेट्स सी। इसका एक अनदर जो जोन बनेगा दैट वुड बी दिस लेवल नाउ। वापस से अगर प्राइस यहाँ पर आता है या फिर इस जोन से, दैट इज 4065, तो ये हमारी 1 आवर की कैंडल बनी हुई है। वही बात है, इट इज जस्ट गेटिंग रेंज बाउंड। Okay, शायद it has taken it. Yeah, the SL has been swept, guys. SL taken. अब वही अगर ये डबल बॉटम क्रिएट करता है 15 मिनट्स पे, या फिर इसका एक बाउंस बैक जोन बनेगा 69 एंड अनदर वन वुड बी दिस अगेन दिस लेवल, जो एक मेजर जोन है जहाँ से प्राइस ने ये बड़ा सा एक बाउंस लिया है। अगर यहाँ तक नीचे आता है एंड इट टेक्स अनदर बाउंस फ्रॉम 4057, क्योंकि अगर ये डबल बॉटम यहाँ से क्रिएट करता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो ये लेवल बनेगा एक प्यारी बाइंग का इधर से। ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस एक रिजेक्शन लेगा इस मूव की एक रिजेक्शन, एक डिप डाउन। मैंने उस डिप डाउन के बेसिस पर अपने ट्रेड्स प्लान करी थी। मेजर ट्रेंड आपको 15 मिनट्स पे बुलिश दिखाई दे रहा है। इवन ऑन 1 डे टाइम फ्रेम वर्स, प्राइस ने पहले क्या किया, प्राइस ने पहले एक हाई लगाया, फिर प्राइस ने एक लो लगाया एंड अब प्राइस एक डोजी क्रिएट कर रहा है। तो डोजी के अंदर ट्रेड्स निकालना इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क। सिमिलरली सेम हैज हैपेंड हियर फॉर अस आल्सो। थोड़ा सा मुश्किल हो गया है यहाँ से, बट it's okay, we will find another trade for the recovery of this loss, so don't worry. Opportunities पूरा दिन मिलती हैं, we will find another one. I'm a physiotherapist, Mr. Max Wise player. 65, 58 तक मैं expect कर रही हूँ। If I hadn't made this profit, and then it would be very difficult for me to. Yes, Mr. Trader Hunt, definitely. ये किसने बोला था मिस्टर सैम भाटी आपको? कौन सी थेरेपी लेनी है आपको? कौन सा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया? दूसरा पैर देखते, कोई मस्ट ट्रेड मत किया। Hold on, I'll be back. Idiot. Brownie. Next trade I'm gonna make carefully. Do you want to try something? What if price rebounces from here? I don't think so it will. या तो ये 69 तक नीचे आएगा ही आएगा। 69, 71 एक अनदर लेवल बनता है, बट यहाँ से तो रिबाउंड का कोई मतलब नहीं बनता है।
और डबल बॉटम एक परफेक्ट लेवल बनता है जहाँ से बाइंग बन सकती है। मेजर लेवल इज 4057 जहाँ से आपको बहुत प्यारी बाइंग देखने को मिल सकती है। यूरो यूएसडी देखते हैं। आपका एसएल अभी तक भी नहीं, आपने एसएल लगाया भी है कि नहीं लगाया सर? कहाँ पे प्लेस कर दिया, कितना बफर कर दिया है? यू शुड नॉट होल्ड इट राइट नाउ। देखो ये वाले 15 मिनट्स हैं, ये खतरनाक है। पूरे 15 मिनट के अंदर प्राइस कुछ भी कर सकता है बिकॉज इट हैज टेकन द रिजेक्शन फ्रॉम दिस वेरी ट्रेंड लाइन। ठीक है, इस रेजिस्टेंस लाइन को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है। इट हैज टेकन द रिजेक्शन फ्रॉम दिस लेवल। इसने इस वाले बिग एरिया को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि प्राइस अगर इस मूव को, जो ये हमारे दो बड़ी बड़ी बाइंग कैंडल्स बनी हुई है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, अगर प्राइस उसको रिस्पेक्ट करती तो फिर यहीं तक की एक रिजेक्शन एक्सपेक्टेड थी। इससे ज़्यादा रिजेक्शन इसको नहीं लेना चाहिए था अगर इसका डिप डाउन होता तो। वहीं तक ही मैंने अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया था। आई डिड नॉट प्लेस इट मोर। देखो काफ़ी नीचे आ चुका है, 76 हैज़ ऑलरेडी टच्ड। यूरो यूएसडी में ओवरऑल जो सिनेरियो है ना वो सर बेरिश है। अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखें तो पूरा का पूरा जो ओवरऑल मेजर ट्रेंड है दैट इज बेरिश। लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, प्रॉपरली लोअर हाई मेंटेन्ड है। यहाँ से प्राइस मूव कर रहा है मेंटेनिंग इट्स मेजर ट्रेंड। तो मैंने आपको अभी स्ट्रीम की स्टार्टिंग में बोला था, जैसे ही प्राइस आपको इस तरीके के राइजेस दिखाता है यू कैन प्लान योर सेलिंग एंट्री। लोअर हाइज प्राइस मेंटेन कर रहा है, सो यू डू नॉट नीड टू वेट फॉर द लिक्विडिटी टू गेट स्वेप्ट, क्योंकि प्राइस प्रीवियस वाला लोअर हाई ब्रेक ही नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके के राइज का वेट करना है एंड देन यू हैव टू प्लान योर सेलिंग एंट्री। दैट्स ऑल इन यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में आपको इसी तरीके से एंट्री मिलेगी। जीबीपी जेपीवाई एक अच्छे लेवल ऑफ रिजेक्शन पर है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखो तो बहुत प्यारा लेवल ऑफ रिजेक्शन है। ये मेजर जोन है रिजेक्शन का। यहाँ से एक एंट्री मिलती है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अभी यार 1 आवर की क्लोजिंग है। अगर 1 आवर की क्लोजिंग के बाद प्राइस एक राइज बैक देता है, दोबारा से मिलता है 203.974, तो एक इसमें एंट्री बनाते हैं सेलिंग की। लेट अस रिकवर। कोई सेल করব কি बना हुआ एक ऑन माय यूट्यूब देयर इज अ फॉरेक्स प्लेलिस्ट करके बना हुआ है मिस्टर अरमानिक्स, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसमें बिल्कुल बेसिक से हाईएस्ट तक मेंशन्ड है कि आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं आएगी अनुराग जी, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप डायरेक्टली बैंक में ले सकते हैं। तो आपने 3 लाख से एक बारी में क्यों लिया मिस्टर पंकज? मैंने आपको हमेशा बोला विड्रॉल की लिमिट आपकी आईटीआर डिफाइन करेगी, इवन इफ यू हैव योर करंट अकाउंट और वॉट एवर इट इज। आपको एक प्रॉपर स्मॉल क्वांटिटी में लेना चाहिए एग्जिट। ऐसा नहीं कि आपने एक साथ सडनली 3 लाख का विड्रॉल लगा लिया। 93 से सेलिंग होल्ड है। हाँ करो करो, होल्ड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। होल्ड अभी एक्सपेक्टेड है, थोड़ा सा और नीचे आएगा। यू कैन गो फॉर विंटेज आफ्टर एग्जिनेस मिस्टर प्रथमेश। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। GBP JPY gold 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 gold. It can come bearish till this level at least 58. आज की बाकी डेली कैंडल इसने पलट दी है यार। डोजी ये ना, डोजी थोड़े होते खतरनाक से ही हैं। कंफ्यूजन कैंडल बन रही है आज के दिन में। सुबह से मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे एक ट्रेड मिलेगी। सुबह से इतना ज़्यादा रेंज बाउंड था। रेंज बाउंड के बाद एक पहले तो एक लो लगा के आया, फिर एक हाई लगा के आया, एंड उसके बाद जब जाके मैंने सोचा था कि ये प्राइस एक मूव दे चुका है, इसके एक रिट्रेसमेंट पर बाइंग बन सकती है क्योंकि बढ़िया एकदम मूव दे रहा है, बट उसमें भी इसने कुछ ज़्यादा मज़ेदार ट्रेड तो नहीं दिया। कह रहा कौन सा पेशेंट ज़्यादा टफ होता है, मार्केट या फिर लोग? भाई दोनों अपनी अपनी जगह में है। इट्स नॉट दैट कि क्या ही टफ है क्या नहीं। मार्केट हैज़ इट्स ओन वैल्यू, पीपल हैव देयर ओन वैल्यू। नहीं मिस्टर शार्थ, मुझे नहीं पता जी। मयूरेश जी, अनुराग जी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आपको एक पिन कमेंट दिया हुआ है, उस पर टैप करो, वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो मिल जाएगा। मिस्टर प्रथमेश बीटीसी के लिए कम है, बाकी पेयर्स के लिए थोड़ा सा हाई है एक्सनेस से, तो वो बैलेंस हो जाता है।
यूएस ऑयल मुझे देखना था डेफिनेटली, मैं यूएस ऑयल आपको देख के बताती हूँ। देखो प्राइस यहाँ से बाउंस कर रहा है, दिस वाज द लेवल 72, ये विक एरियाज़ हैं, बट अब हमें क्या, वी विल हैव टू वेट फॉर अ प्रॉपर एंट्री नाउ। प्रॉपर एंट्री हमको मिलेगी 60 से 57 से 60 के बीच में, जहाँ पर प्राइस एक डबल बॉटम क्रिएट करता है। तो बाकी यार अच्छी ट्रेड थी ये। यूएस ऑयल डेली टाइम फ्रेम पर रेंज से निकली कि नहीं निकली? नहीं निकली रे बाबा, नहीं निकली। यूएस ऑयल के अंदर एक लट्ठा आया, इसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, वन सेलिंग कैंडल, उसका एक राइज आया, द सेलिंग इज कंटिन्यूइंग इटसेल्फ। आज की जो कैंडल है मारुबोजू ओपन है, सो इट इज जस्ट बीइंग बेरिश। तो तुम्हें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आना है, राइज का वेट करना है, राइज के बाद ये आया हुआ है राइज, सेल प्लान करना है, दैट्स इट। फिलहाल के लिए बेरिश है। अगर इस जोन को तोड़ देता है, यहीं तक का आप टारगेट रख सकते हो, इस जोन को तोड़ता है तो फिर आप कंटिन्यू करो अपना होल्ड, बहुत अच्छा नीचे जा सकता है यूएस ऑयल। समझ गए बात को? सारी मार्केट बह रही है आज। जेपी बाय 6 more minutes। इथेरियम होल्ड पे है, बीटीसी बुलिश दिख रहा है यहाँ तक के लिए सिर्फ। कैट तो बेकार पेयर है। यूरो JPY, व्हाट इज इट डूइंग? डेली टाइम फ्रेम पर बुलिश है, इट इज होल्डिंग इटसेल्फ। तो आप बाइंग की एंट्री देखो, डे का हाई ब्रेक होता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन ऑफ रिजेक्शन बन चुका है। आप यहाँ पर देखो यूरो JPY में, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जोन ऑफ रिजेक्शन गाइस। आज की कैंडल भी यहीं ओपन है, कल की कैंडल भी यहाँ ओपन है, हाई लगाया लो लगाया, लेकिन कैंडल की बॉडी ओपनिंग यहीं पर है। कैंडल क्लोज किया यहाँ पे, आज की भी ओपन यहाँ पर है। द प्राइस इज अगेन शोइंग अ रिजेक्शन फ्रॉम डाउन साइड, जो कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मामले की वजह से आपको बाउंस देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज बायर्स हैव बीन डोमिनेटिंग एट दिस वेरी पॉइंट। बट कुछ ऐसी खास एंट्री नहीं दिख रही है, बट ये लेवल बहुत अच्छा है रिजेक्शन का। प्राइस तो हमें दोबारा मिलता है यहाँ पे, तो सेल प्लान करो। गोल्ड पाची धोखे दे गए आज हमें। साक्षी जी, कमेंट, पिंड कमेंट में आपको लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके देखें। उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे आप मलिका ट्रेड लाइक मलिका में लैंड करेंगे, उसके बाद आपको पिंड मैसेज मिलेगा, वहाँ पर क्लियरली मेंशन, आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। भगवान नहीं हूँ ना मिस्टर डेपेम ऑफिशियल, इसलिए आई एम अ ट्रेडर नॉट अ गॉड। आई डोंट नो अरबाज जी, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। Nice, Mr. Hirsch. Hello. लास्ट वीक अच्छा था, उसके बाद पूरा सितंबर ग्रीन था। लोग बोलने वाले हैं, बोलते रहेंगे, आई डोंट केयर। जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, दे आर इन प्रॉफिट्स, दे आर नॉट इन लॉस। अब जो लेते 2-4 ट्रेड हैं, अब उनकी बद्दुआ की वजह से लग जाए हमारे एसएल, तो हम क्या कर सकते हैं? Cannot do anything. This was a good idea, this was a good perfect trade. There were confirmations थी, ट्रेंड बुलिश था, एक डिप डाउन था, प्रॉपर प्राइस ने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमको एक अच्छी बाइंग की क्लोजिंग दी थी। उसके बाद जाके हम लोगों ने एंट्री प्लान करी थी। यहाँ पर प्राइस ने क्लोज किया था, उसके बाद प्राइस ऑलमोस्ट 83 तक का हाई भी लगा के आया। हम लोगों ने इधर अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया था। प्राइस ने बहुत स्ट्रगल किया उस जोन पे, क्योंकि एक बिग एरिया था। सो दिस वाज अ गुड ट्रेड। आई वोंट से दैट इट वाज सच अ रैंडम ट्रेड और समथिंग लाइक दैट। इट वाज अ गुड ट्रेड, बट इट डज नॉट हैपन कि मार्केट हर बार आपकी तरह ही रिस्पेक्ट करे। यस मिस्टर अमन, मेरी फैमिली में कुछ चीज़ें थी। माई ब्रदर वॉज नॉट वेल एंड मेरी फ़्लाइट भी थी 14th की, मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके आनी थी घर पे। सो आई वॉज अ बिट बिजी।
हुई थी मिस्टर एहसान, ये देखें ये 5 मिनट की क्लोजिंग ही थी, हमारी एंट्री इसी लेवल्स पर थी 81 पे, प्राइस 83 तक का हाई 84 तक का हाई भी लगा के आया था, उसके बाद भी प्राइस ने एकदम काफ़ी देर तक यहाँ पर होल्ड किया है अपने आप को। अब देखो ये मूव डिसकंटिन्यूइंग इटसेल्फ, इसका टिप डाउन यहीं तक था, ये 0.5 और 618 का लेवल है फिबोनाची का, सो इट इज़ गिविंग यू अनदर गुड मूव। प्रॉपर 0.5 का लेवल है, सिनेरियो इसका बुलिश ही है, ले गया ये मूव बैक कर गया। अब 1 आवर पे देखो बहुत बढ़िया बुल कैंडल्स बनी हुई हैं, एक रिजेक्शन लाइन थी, दैट इज़ वाई मैंने सिर्फ यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान नहीं करी थी, मैंने तुम्हें बोला था प्राइस रिजेक्शन लाइन पे रिजेक्शन लेगा, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 78 तक होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ना प्राइस ने 1 आवर के ऊपर एक मस्त रिएक्शंस दिखाए हुए हैं, प्रीवियस में एक अच्छी कैंडल है, यहाँ पर होल्ड किया हुआ है प्राइस ने, इजीली ब्रेक डाउन नहीं दिया हुआ है, सो दिस वाज अ गुड लेवल, ब्रेकआउट रीटेस्ट लेवल। It will be range bound, Shweta ji. That depends, Mayurish. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 58 के आसपास मिस्टर मोहम्मद। नहीं मिस्टर मैक्स वाई प्लीज नो। यस मिस्टर अमरीकी तेल के अंदर राइस पे सेल कर दो। If you're from Canada and you have over $10,000 of debt, credit cards, payday loans, lines of credit that you can't pay off or get to zero, don't worry, you're not alone. Within 48 hours, you could be eligible to get rid of up to 80% of those debts. All you have to do is apply to check if you're eligible. Click the link below right now, fill out the quick survey, and that's it. You could be on your way to financial freedom. बस क्लोजिंग है अब तो इसकी 1 आवर के ऊपर भी within few seconds। अब तो प्राइस इन बिटवीन हो चुका है, बिल्कुल बीच के अंदर खड़ा है। नहीं मिस्टर आदित्य, yeah, दुबई is fine। वहाँ का वेदर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। मिलते ही अंश जी, बिल्कुल। सोलाना मैंने कभी स्टडी नहीं किया है मिस्टर रघुनाथ जी, तो इसलिए आई कैन नॉट सजेस्ट यू। कहाँ थी इतने दिन? आई वाज बिजी समवेयर। री एंट्री बाबा, री एंट्री अपनी बनेगी इधर ही अब 58 के आसपास में। डबल बॉटम क्लियर हो जाए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, प्रीवियस के वाले लो को ब्रेक ना करे। यहाँ पर बहुत सारे जोन्स हैं जहाँ से वो बाउंस कर सकता है। दिस कैन बी द 69 का लेवल, दिस कैन बी द 71 का लेवल जहाँ से प्राइस ने एक राइज भी लिया है, बट इट इज़ नॉट शोइंग एनी डिफाइंड वैल्यू, क्योंकि अब प्राइस इन बिटवीन आ चुका है। ना तो इसका कोई सर है ना कोई पैर है। यहाँ पर प्राइस विक्स ज़रूर हैं, यहाँ पर बाउंस बैक एरियाज हैं, बट यहाँ पर कन्फर्मेटरी एंट्रीज मिलना मुश्किल है। सो दैट इज़ वाई हम लोग प्रॉपर वेट करेंगे एंट्रीज का। अब देखो 1 आवर के ऊपर जो ये हमारी कैंडल है उसका ओपनिंग है, देखो कितना लो लगाती है या हाई लगाती है, किस तरीके से मूव करती है, हाउ इट रिएक्ट्स। क्योंकि प्रीवियस वाली जो आपकी कैंडल है वो एक रिजेक्शन लाइन से रेजिस्टेंस लाइन से रेजिस्टेंस लेकर आ चुकी है। नॉट प्लानिंग एनी एंट्री इन बिटवीन। माई एंट्री पॉइंट, नेक्स्ट एंट्री पॉइंट वुड बी दिस लेवल, दैट इज 57। और ये वाला जो पूरा जोन बना हुआ है, इस बीच में मुझे चाहिए एक अच्छी ग्रीन एंट्री, एक ग्रीन क्लोजिंग। देखो 15 मिनट्स की जैसे ये क्लोजिंग है, जैसे हमने ये सेम क्लोजिंग 5 मिनट्स पर देखी थी हमारी प्रीवियस ट्रेड में। Current zone is a trap for the buyers, can say.
Oh, sad, Mr. Raman. Which time frame, Dhanraj? I should close everything. Hi, Thakur. How are you? I'm good. लोग इतने बुरे हैं कह रहे हैं आज मैडम का ऐसे लिया तो आज स्ट्रीम लाइव नहीं करेंगे क्या यार प्रॉफिट्स भी यूज नहीं करके जाते हो bad trades over here. कर दो जल्दी से स्ट्रीम लाइक अटेंडेंस प्लेस कर दो अपनी अब तो ये बेहतरीन ट्रैप जोन के अंदर है मस्ट ट्रैप करेगा आपको एटलीस्ट लीव दिस 56 यही जोन बनेगा अभी डबल बॉटम जैसे ही क्रिएट करेगा वी कैन प्लान अ बाइंग एंट्री एट दिस पॉइंट प्रीवियस कैंडल के अंदर 1 आवर के ऊपर एफपीजी है नहीं है एफपीजी देयर इज नो एफपीजी ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम सर दोनों both the wicks have been filled up और प्राइस वैसे भी कंटिन्यू कर रहा है टुवर्ड्स सेल साइड वंस इट विल क्रॉस दिस लेवल 68 को क्रॉस करेगा इजी 58 आएगा 100 पिप का मूव देगा हाँ जीबीपी देखना था मुझे जीबीपी में थोड़ा सा राइज चाहिए था यार एक लेवल बहुत अच्छा है ये सेलिंग का ये 203.337 तक आ सकता है बट प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही नीचे आ चुका है अगर ये थोड़ा सा भी मुझे राइज बैक देता ना यहाँ पे जो क्लोज किया है उसका थोड़ा सा भी राइज बैक देता सो आई वुड हैव प्लान माई सेलिंग एंट्री इन जीबीपी क्योंकि बहुत अच्छा लेवल है सेलिंग का बीटीसी में यार बाय अबव बनेगा ये जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बना हुआ ना इसके ऊपर तुम बाय अबव बनाओ बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे बीटीसी में जीबीपी मस्त बेरिश हो रहा है यार गोल्ड भी यूएसडी जेपीवाई तो एक जगह ही होल्डेड है 1 आवर का टाइम फ्रेम है ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के आप कैंडल्स देख रहे हो हाउ कैन यू प्लान योर एंट्री इन दिस टू मच हॉच पॉच further fall can take place till 58 I am expecting Mr. Madi euro what is this euro तो है ही bearish यार bear अपना move continue कर रहा है euro तो है ही bearish हमारे ट्रेड जोन ऐसा है जीबीपी कुछ खास दिखा नहीं रहा है सी टाइप पे गोल्ड अपने मजे ले रहा है गोल्ड फिलहाल अभी बिटवीन आ चुका है कैंडल प्लान एट दिस पॉइंट सी टाइप पे रख रहा हूं अरे मिस्टर मैडी इट्स जस्ट दैट कि फ्राइडे को डेफिनेटली प्राइस ने फॉल लिया है बाहर ओवरऑल जो सिनेरियो है वो हमारा बेरिश भी तो है ना लेना था उसको यहाँ से एक फॉल लेना था इट वाज नेसेसरी अब ये एक ऐसी रेंज के अंदर है एक हेल्दी रिट्रेसमेंट ले चुका है बायर्स को इनवाइट कर चुका है फिर से सेलर्स को यहाँ से इनवाइट कर चुका है और आज के दिन जो हमारी कैंडल है एक सबसे पहली बात की इनसाइड कैंडल ना तो इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करा है ना इसने हाई ब्रेक करा है इनसाइड कैंडल वैसे भी बहुत मुश्किल होती है ट्रेड करने के लिए बहुत केयरफुली आपको ट्रेड करना पड़ता है एक अच्छा प्रॉपर सेटअप होना चाहिए सेटअप होने के बावजूद भी प्राइस उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करता है जो कि फिलहाल अभी हुआ गोल्ड की सेलिंग एंट्री आप यहाँ पर नहीं बना सकते आप यहाँ पर एक चीज़ देखो ना यहाँ पर भी विक है यहाँ पर भी विक है कहीं से भी प्राइस बाउंस कर सकता है प्राइस कैन डू एनीथिंग इट वांट ये बीच के अंदर है यहाँ पर बिल्कुल बिटवीन में है प्राइस इट विल नॉट गिव यू एनी डायरेक्शन नाउ कि मैं टुवर्ड्स बाय साइड ही जाऊंगा या फिर मैं टुवर्ड्स सेल साइड ही जाऊंगा अब देखो बना की कैंडल अपनी ओपन हुई है प्राइस ने लो लगाया वहाँ से वापस ऊपर आई है 72 से 77 78 का 50 पिप्स का मूव ऑलरेडी आपको ये कैंडल दिखा चुकी है सो हाउ कैन यू प्लान योर सेलिंग एंट्री एट दिस वेरी पॉइंट सर ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला हो चुका है यू विल हैव टू फाइंड फॉर अ प्रॉपर सेटअप यहाँ पर आपको एक अच्छे लेवल का वेट करना पड़ेगा अच्छा लेवल यहाँ पे 58 का बनता है अगर 1 आवर पे और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर प्राइस डबल बॉटम क्रिएट करता है तो आप एक चीज नोटिस करना डबल बॉटम डबल टॉप फिलहाल इन दिनों में बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त तो बहुत दामी पीसी किंग्स सी टाइप चार्ज दा जाएगा नहीं सी टाइप चार्ज दा जाएगा नहीं हम यहाँ से की किंग्स Which degree do I have? Physiotherapy, BPT. Also my master's is running. शौक है मुझे पढ़ने का
1 मंथ के टाइम फ्रेम पर अभी तक भी एक भी लाल कैंडल नहीं है गोल्ड के अंदर. 1 2 3 चौथा महीना है बैक टू बैक इट इज बीइंग बुलिश. यहाँ पर प्राइस ने सिर्फ अपने आप को होल्ड किया है. ये वाली कैंडल अगर लाल बनती है महीने की जिसके अंदर सिर्फ 11 दिन बचे हैं, अगर ये पूरी कैंडल रेड बनती है इसके नीचे आती है 3 तो ये भी তোমার তো এখন সিট আছে না তোমার মোবাইল কিনছো আরে না না আমার কেবল আছে না আমাদের সিট একটু गाड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है. ये वाली रेंज थोड़ी सी बड़ी है. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस मंथ कैंडल शुड बी रेड फॉर अ हेल्दी डिप डाउन टू बी कंसिडर्ड. वीक की आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल चुकी है. वीक के रिजेक्शन के बाद प्राइस ने अगेन एक बाउंस लिया. बाउंस पूरा का पूरा रिजेक्ट बैक हुआ. एक्सपेक्टिंग कि प्राइस अपने लोअर हाइस मेंटेन कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर. आज की कैंडल तो भैया मदर कैंडल के अंदर की एक इनसाइड कैंडल है. इनसाइड कैंडल बहुत डिफिकल्ट रहती है ट्रेड करने में, बट स्टिल इफ वी विल फाइंड एन अपॉर्चुनिटी एट दिस 58 का लेवल डबल बॉटम क्रिएट करता है प्राइस 15 मिनट पर 1 घंटे पे, तो फिर हम एक एंट्री प्लान करेंगे 4058 से. हाय मिस्टर साहिल दांगी, आई एम गुड. व्हाट अबाउट यू? नहीं, मैं सेलिंग में अभी फिलहाल कुछ नहीं देख रही हूँ बिकॉज प्राइस टोटली इन बिटवीन है. अगर मुझे सेलिंग देखनी होती तो मैं इस रेजिस्टेंस लाइन से ही देखती, बट माय व्यू वाज कि प्राइस एक अच्छा बुल मूव दे चुका है तो एक रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग कंटिन्यू करेगा. बट उस रिट्रेसमेंट के लिए हम थोड़े से अर्ली थे. The price is taking bounce from 72. Hopefully it might come down from here also. It is just taking pause at this very moment. इस pause के अंदर ट्रेड करना मुश्किल है. न्यूज़ भी हो गए इस वीक में. बिल्कुल. हाँ बट एक न्यूयॉर्क सेशन में देखूंगी मैं. आज ही है कैड की न्यूज़ है. आज सीपीआई है कैड की आज रात को 8:30 यहाँ पर, तो मतलब वहाँ पर 7 बजे. नाइस. वेंसडे को भी जीबीपी की सीपीआई है. थर्सडे को यूएसडी एफओएमसी है. ओह माय गॉड, एफओएमसी है भैया इस थर्सडे. 2 AM हियर मीन्स कि रात के कितने बज रहे? 1 बज रहे? 12:30 बजे है वहाँ पे. ये बाउंस बैक डेफिनेटली इट इज अ 50 पिप मूव, बट इट इज जस्ट अ कंफ्यूजन. दिस इज नॉट कंसीडर्ड अ बाउंस बैक. শোনো তোমার যেটা বলার জন্য ফোন দিছি. पेरोल भी है at তুমি একটা 7 PM. बाय बाय. थर्सडे को एनएफपी है. তুমি একটা সেক্টিস আগো. थर्सडे को ही एफओएमसी भी है. पूरा न्यूज़ भरा मूव है भैया. वीक है, न्यूज़ भरा वीक है. दिस वीक यू कैन सी गुड मूव्स. बीटीसी सर, बीटीसी के ऊपर आप यू विल हैव टू प्लान योर एंट्री समवट लाइक बाय अबव. 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर आप बीटीसी देखें बाय अबव तो प्राइस बेरिश है. एक अच्छे लेवल ऑफ डिमांड से बाउंस कर रहा है. बाउंस किया, आज की कैंडल ग्रीन बन रही है, बट जब तक प्राइस इसका हाई ब्रेक नहीं करता आपको एक अच्छी बुलिश एंट्री देखने को नहीं मिल सकती है. सो यू विल हैव टू वेट फॉर अ गुड ब्रेक आउट ऑफ दैट वेरी लेवल. It's not less time, Mr. Sahil Dangi. It's been years, 8 to 10 years. He have a good back. उनके पास बहुत अच्छा पैसा है. उन्होंने चीज़ों से पहले पैसा कमाया. उसके बाद now he is risking his own earned money. He is not risking any other money. जो उन्होंने इस फील्ड से कमाया, सोशल मीडिया से, कोर्सेज से, and even if with his own trading, उन सब से जो भी कमाया, अब उनको कोई fear नहीं है even if his losses. So he is making money with a good mindset. उनका mindset बहुत अच्छा हो चुका है इस वक्त. It is all the role of the mindset, Mr. Sahil Dangi. BPT, ARPA. GBTC trader. कल तो नहीं दिखा रखी है NFP इसके अंदर. Congratulations, it's Monster FR. My age is 25.
कल एनएफ पे कल तो कोई न्यूज़ ही नहीं है। एनएफ पे डिफाइंड है अभी तक थर्सडे को। Yes, I'm 25. This is a very bad entry. देख लो अब इस गोल्ड की हरकतें, ग्रीन रेड दिमाग खराब हो गया इस गोल्ड का। And the single candle is of from 72 to 81. 60 की है ये, देख लो यार। Bro. Fuck. The single candle is of 86 pips. This is bad. अब यहाँ पर ऐसे ऐसे मूव्स बन रहे हैं। Can I close half? मैंने सोचा था कि जहाँ से एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी हुई है और प्रीवियस में प्राइस ने यहाँ पर भी रिएक्ट किया हुआ है और इतना स्ट्रॉन्ग मूव आया हुआ है तो डिप छोटी होगी। डिप इतनी बड़ी आई, देखो 71 तक की आई। जेबी अगर आती है इस जोन तक 203 तक सेल प्लान करेंगे। इथेरियम तो भैया कुछ ज़्यादा ही सड़ा हुआ है। बीटीसी में बाय अबव ही बनाने का फ़ायदा है, नॉट बिफोर दैट। और यूएस ऑयल के अंदर अनटिल एंड अनलेस इट गिव्स यू अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस वेरी लेवल, खतरनाक ही चल रहा है भैया ये तो। ब्रेकडाउन देता है इस जोन ऑफ डिमांड का तो एक अच्छा सेलिंग देखने को मिल सकता है आपको। और डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप पूछो तो वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्गली रेंज के अंदर है ये देखो पूरा रेंज के अंदर है, बट प्राइस ने नया लोअर लो लगाया। ये वाले गैप जो है वो फिलअप किए। पहले प्राइस इस रेंज में घूम रहा था 59.535 तक की, उसके बाद प्राइस ने एक अच्छी सेलिंग कैंडल दिखाई, राइज बैक दिया। नाउ इट इज़ अगेन टुवर्ड्स द सेल साइड। अब अगर प्राइस अगर आज की डे का ओपन ब्रेक कर देता है तो फिर तो इट कैन फॉर्म अ डोजी और समथिंग लाइक दैट। इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो ये लेवल बना हुआ है जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है यूएस ऑयल के अंदर। बीच में आ गया अभी है ना गोल्ड का प्राइस। मूव देख लो, इसके मूव देख लो। नाउ इट इज मूविंग। That's enough for you, Mr. Sahil. BTC माइनस में नहीं जाएगा। यूरो यूएसडी बेरिश है मिस्टर नील, आपको राइस पर सेल करना है। आपको मेरी डिग्री से क्या करना है मिस्टर अकील? Strong bullish candle. 2 lots अक्षय जी। माइंडसेट बनाने के लिए पैसा होना चाहिए बैक में मिस्टर साहिल दांगी। दैट इज हाउ यू कैन बी अ ट्रेडर लाइक दैट। व्हाट्सएप पे मत कीजिए, इस पे कीजिए आप मिस्टर रितेश, और टेलीग्राम पर कीजिए। गोल्ड का क्या होगा? गोल्ड का भैया गोल्ड ले जाने क्या होगा। नेक्स्ट एंट्री पॉइंट अपनी इसी लेवल से बनेगी 58 के आसपास टूवर्ड्स बाइंग साइड। बना की कैंडल एक लो लगा के जा चुकी है ऊपर की तरफ। No, we will have to wait. Fenelo, अभी कोई reaction नहीं बनेगी। मलिका खुराना, मिस्टर रंजन। एसआर में घर सजी। मेजर सपोर्ट मिस्टर नील 1 डे के टाइम फ्रेम पर यूरो यूएसडी का
वो बनता है जहाँ से प्रीवियस में प्राइस ने बाउंस लिया है, ये लेवल। यहाँ पर एक डबल बॉटम क्रिएट हो सकता है, ये एक वो था एफवीजी था, यहाँ पर जब प्राइस वाज ट्रेडिंग एट दिस पॉइंट तो मैंने बोला था आप सेलिंग बना सकते हो टिल दिस एफवीजी। प्राइस ने प्रॉपर उस एफवीजी तक आया, बाउंस किया, लोअर हाई मेंटेन कर रहा है। आज की जो कैंडल है कंप्लीटली बेरिश है, राइस पे सेल प्लान कर सकते हो डबल बॉटम क्रिएट करने के लिए। जो इसका मेजर डिमांड एरिया है दैट इज अगेन दिस 1.14901, अगर आप इसको कंसिडर करते हो दैट इज 1.15504। यहाँ पर आपको देखना रहेगा कि 15 मिनट पर, 1 घंटे पर, 4 घंटे पर कैंडल किस तरीके से बिहेव कर रही है, एंड उस बेसिस पर आप अपनी स्मॉल इंट्राडे बाउंस बैक एंट्रीज बना सकते हो। बट अगर आप मेजरली मुझसे पूछो तो यूरो यूएसडी कंप्लीटली बेरिश है और गोल्डी बाजी सिर्फ ट्रैपिंग के मोड में है फिलहाल, क्योंकि वो बीच के अंदर है। प्राइस इज बीइंग जस्ट रेंज बाउंड, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर काइंड ऑफ डोजी बन रहा है, कभी वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, कभी वो ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। सो इट्स नॉट दैट कि मार्केट का फोर्ट है, बट इस टाइम पर आपको एंट्रीज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक सही एंट्री मिलना भी मुश्किल हो जाता है। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लान दी एंट्री एट दिस वेरी पॉइंट। वी ट्राइड आवर बेस्ट टू प्लान वन एंट्री, बट प्राइस ने थोड़ा बहुत ज़्यादा नीचे तक का बाउंस बैक किया। उसके बाद जाके आपको 80 पिप की सिंगल कैंडल दिखाई है। नाउ विल हैव टू वेट फॉर अ प्रॉपर एंट्री दैट इज 57-58, और या फिर मुझे इस रेजिस्टेंस लाइन के ब्रेकआउट पर भी एंट्री मिलती है तो भी आई विल बी प्लानिंग विद यू गाइज, ठीक है। लगा है बहुत बार लगा है मयूरेश, बट दैट डिस्टर्ब्स माय साइकोलॉजी। मैंने 2 से ज़्यादा लॉट्स लेने की कोशिश करी है, 10-10 लॉट्स लिए हैं मैंने, 10-20 लॉट्स भी लिए हैं, बट उस टाइम पर जब मैं उसको होल्ड कर रही हूँ तो मेरे अंदर से एक डर आ रहा था। सो फिर आई डिसाइडेड दैट आई विल ट्राई विद वन सिंगल लॉट, जिससे अगर मैं ट्रेड को होल्ड कर रही हूँ तो मुझे कोई डर नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने अपने माइंड सेट को प्रॉपर करने के लिए 2 लॉट्स के ऊपर अपने आप को सस्टेन किया। जिस मेथड से डिपॉजिट किया उसी मेथड से विड्रॉ ले सकते हैं। ट्रेडिंग एनालिसिस बिल्कुल सही है मोहम्मद दुफाइजा, दैट्स गुड। This isn't just नहीं वंश, इट्स नॉट दैट, इट्स दैट कि मेरे को एक रिजेक्शन का वेट था, दैट रिजेक्शन कुड बी टिल दिस लेवल। मेरा एक्सपेक्टेशन था 77, 78, 79, क्योंकि प्राइस देखो यहाँ पर मस्त एकदम विक्स दिख रही हैं आपको, एक अच्छा जोन दिख रहा है डिमांड का, एक ऐसी कैंडल जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस की हुई है। बट प्राइस ज़्यादा नीचे तक आया, प्राइस आया 71 तक, उसके बाद आपको एक कैंडल दिखाई बाउंस की। अभी भी प्राइस इन बिटवीन है, ओवरऑल माजरा बुलिश ही है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, इट सीम्स टोटली बुलिश एट दिस वेरी पॉइंट। समझ रहे हो बात को? Yes, you will have to follow the rules. Money will follow you definitely. That's a good point, sir. अभी तो प्राइस बिल्कुल बीच के अंदर है, यहाँ से कोई ट्रेड नहीं बनती है। आई ट्राई कि अगर मैं आई तो मैं लंदन उसमें न्यूयॉर्क सेशन में आकर लाइव आकर ट्रेड करते हैं, अदरवाइज मैं ग्रुप के अंदर आपको ट्रेड अपडेट करके दूंगी, ठीक है। वी विल डेफिनेटली रिकवर द लॉस फॉर टुडे। Yeah, definitely, Mahesh. That might happen someday. ठीक है guys, I will see you guys in the New York or tomorrow. Bye bye. প্রিমিয়াম বক্স সানগ্লাসগুলো পাবেন মাত্র 870 টাকায়, ফ্রেম মেটাল ফ্রেম। তারপর যারা একটু হচ্ছে ফাইবার ফ্রেমের মধ্যে চাচ্ছিলেন, তার ফাইবার ফ্রেম You turn my guitar on. 850 টাকা পাবেন, 870 টাকা, 850 টাকা।